Okay, so okay. So today we are going to learn natural perfumery. Okay, so natural perfumery is totally different than the synthetic ones. ठीक है? आफ्टर द वर्कशॉप मैं आपको सिंथेटिक का भी आइडिया दे दूंगी इफ यू वांट टू डू दैट. ओके, बिकॉज उसके लिए कुछ ज्यादा स्किल विल कुछ जरूरत नहीं है. इट्स वेरी व्हाट यू से इट्स जस्ट अ रेगुलर मिक्सिंग फॉर सिंथेटिक. हाँ, वो कल हम कर लेंगे आफ्टर द प्रैक्टिकल. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू थ्योरी. एक्चुअली थ्योरी बहुत ज्यादा है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग व्हाट. अदरवाइज इट्स जस्ट मिक्सिंग, कोई बड़ी बात नहीं है. यू मस्ट हैव सीन अदर क्लासेस आल्सो, कितने सारे हैं जो ऑनलाइन करते हैं. तो वहां से मिक्सिंग होता है, मतलब दे विल गिव यू द फॉर्मूला, यू जस्ट डू इट. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, गिव मी अ मिनट. कैन यू सी द स्क्रीन? Yeah. ओके, सो ओके, सो दिस इज माय सर्टिफिकेट. मार्च में ही मिला है मुझे, मतलब चालू 1-2 साल से था. फाइनली बिकॉज आई हैड टू सेंड द सैंपल टू आयरलैंड एंड Okay. यहाँ से वहां भेजना वाज वन टास्क. देन आई हैड टू वेट फॉर माय हस्बैंड्स फ्रेंड टू कम टू इंडिया. फिर वो जब गया है आयरलैंड तब उसने वहां से पोस्ट किया. इट वाज लाइक दैट. सो आई एम अ what do you say, a diploma holder, graduate of natural perfumery. This is the other certificate of marketing unka. Okay, so what is natural perfume? You can interrupt me anytime, any questions, then and there Yeah. we'll talk. Okay, but ideally let me just finish. मतलब बीच में आप करिए बट एकदम रैंडम क्वेश्चन मत पूछिएगा वरना वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. मतलब once we pause the recording we can talk of more bigger things. Sure. So what? Yeah. So what is natural perfumery? It's the art and science of creating perfumes entirely from natural aromatic material. Okay, without any synthetic or artificial fragrance chemicals. Not even a small drop of anything synthetic goes into our perfume. Okay, try not to mix it. Natural to natural, synthetic to synthetic. तो जब सिंथेटिक बनता है ना, इट इज एब्सोल्युटली सिंथेटिक होता है वो. मतलब देयर इज नॉट इवन अ आउंस ऑफ एसेंशियल ऑयल और एनीथिंग इन दैट. So what are the material that you're going to use? You're going to use essential oils. You're going to use absolutes. You know what are absolutes? Okay, for example, oak moss. अगर oak moss आप लेते हो ना, तो आपको ऐसे ऑयल फॉर्म में नहीं मिलता. You will get it, ऐसे वो you'll get it very thick kind of gooey stuff. All right, and you have to dilute it in the oil. मैं कल थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी आपको बिकॉज ओकमॉस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और वो सच में एब्सोल्यूट में ही मिलेगा आपको. ओके, इट एब्सोल्यूट मतलब ऐसे थिक रहेगा वो, लाइक अ टार. ऑलराइट. देन रेजिन्स एंड बैल्सम. रेजिन इज ऑल्सो समथिंग लाइक एब्सोल्यूट. ओके, बट थोड़ा सा वो पतला रहता है, दैट्स इट. देन देर आर टिंचर्स. टिंचर्स मतलब हम अल्कोहल में, नेचुरल अल्कोहल में जब इंफ्यूज करते हैं ड्राइड फ्लावर्स or fresh flowers, then the product that you get is called tinctures. And there is something called natural fixative. Okay, now those are actually essential oils which are base note. तो जब भी परफ्यूम आप बनाएंगे, मैं डिटेल में भी जाऊंगी. इट्स लाइक यू नीड अ फिक्सेटिव, वरना उड़ जाएगा. आप लगाओगे आधे घंटे में उड़ गया तो डजंट मेक सेंस. परफ्यूम हैज टू स्टे ऑन योर बॉडी. ओके, नाउ नेचुरल परफ्यूम has its own limitation. The maximum it will be like 4 to 5 hours. ओके, बट जितना ज्यादा आप नेचुरल फिक्सेटिव स्ट्रॉन्ग लोगे उतना लंबा जाएगा. बट जो बोलते हैं ना 8 घंटा 12 घंटा, वैसा नहीं होता नेचुरल परफ्यूमरी. इतना याद रखिए आप. आर यू क्लियर? एनी क्वेश्चंस? No. ओके. So obviously why you're using natural perfumery? Because it's derived from plants in nature. It evolves on your skin. जब नेचुरल परफ्यूम लगाते हो ना आप, तो जैसे जैसे टाइम जाता है ना, वो परफ्यूम भी अलग अलग स्मेल करने लगता है. इट डिपेंड्स. लाइक इंडिया, इन मुंबई इट्स सो हॉट. तो आप लगाओगे, इनिशियली थोड़ा अलग स्मेल आएगा, फिर आप थोड़ा पर्सपायर होंगे, थोड़ा पसीना आएगा, तब वो परफ्यूम का थोड़ा टोन चेंज हो जाता है. तो इट इवॉल्व्स ऑन योर स्किन.
Obviously, it's a biodegradable and skin friendly, and it has a deep reach and complex kind of a smell. Synthetic is totally opposite, that you can read. So let's start with essential oil. So essential oils are concentrated plant extracts. They are obtained through steam distillation, cold pressing और CO2. आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ nothing specific. The sources are flowers, leaves, bark, seed, roots, or peels. Example, obviously lavender, lemon, cedar wood. What is the function? It provides the main aromatic identity of a perfume. So essential oils are highly volatile, and balancing them requires practice and disciplined use. Okay. Now, do you have like any asthma or sinus ऐसा कुछ है? नहीं. नहीं है. Your nose is good, right? So जब भी आप Extra परफ्यूम good. बना, Extra good. एक्स्ट्रा गुड इज एक्सीलेंट बिकॉज मेरा नहीं है. मुझे जब लास्ट टाइम, यू वोंट बिलीव, मेरा एक ऑफलाइन वर्कशॉप था, दो लोगों ने एनरोल भी किया था, और मुझे उसके एक हफ्ते पहले सर्दी हो गया एंड आई लॉस्ट कंप्लीट सेंस स्मेल. Oh God. आई टू कॉल इट ऑफ. यार कितना, आई कांट इवन प्रिटेंड ना, वाओ नाइस, मतलब स्मेल ही नहीं आ रहा था मुझे. सो योर आइडियली, यू नो, यू शुड हैव अ गुड नोज. मतलब सर्दी वर्दी अवॉइड करिए इफ यू आर गोइंग टू मेक अ परफ्यूम. ऑलराइट, बिकॉज आपको वो स्मेल नहीं आएगा. वी हैव हाँ. ओनली वन ओल्ड फैक्ट्री, दैट इज आवर नोज, और कुछ है नहीं अपने पास. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, यू, आप सीखोगे ये. आज मैं सिखा दूंगी, आज थ्योरी होगा, कल प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल इज वेरी सिंपल, इज मिक्सिंग, बट कल के दिन भी थोड़ा थ्योरी रहेगा. आई विल बी गोइंग लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरी टुमारो. आज के दिन मुझे एकदम बोम्बार्ड नहीं करना है, आई वांट टू कीप इट लिटिल इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आई वाज सेइंग, क्यों इतना बात कर रही थी मैं? या सो कल जो मैंने, हम टोटल कल 10 परफ्यूम्स बनाएंगे. ओके. आपको सो टिपिकली आई वुड सजेस्ट गो फॉर 5 अत्तर्स एंड 5 स्प्रेज. स्प्रे भी नेचुरल अल्कोहल, सो यू गेट एन आइडिया. ओके. आपको चाहिए तो 10 के 10 अत्तर कर सकते हैं, बट डोंट लूज ऑन द स्प्रे पार्ट. ओके. हाँ. सो एसेंशियल ऑयल्स, तो ये 10 आप सीख लोगे. ओके. डोंट थिंक दैट दिस इज इट. ओके. और एवरी टाइम व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग न्यू, यू कैन कम बैक टू मी कि ये बराबर है कि नहीं. वो आपको ही एक्सपेरिमेंट करके आपको ही डिसाइड करना है. हम्म. बेस में दूंगी कि विच इज टॉप नोट, मिडिल नोट, बेस नोट, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा. ओके. वो सब नोट्स में भी है. वो सेम नोट्स आर आई मेड इनटू प्रेजेंटेशन. ओके. बिकॉज दैट नोट इज अ वेरी बिग 52 पेजर नोट्स है वो. सो आई टू ब्रेक इट डाउन, बट आई वी कांट मिस ऑन एनीथिंग, इसलिए मैंने पूरा का पूरा उसका ही पीपीटी बना दिया. Then, of course, we come to absolutes. They are highly aromatic. They are obtained through solvent extraction. उसका एक प्रोसेस होता है, वो हम नहीं करते, वो मैन्युफैक्चर ही करता है. ये क्यों एब्सोल्यूट्स बनते हैं? बिकॉज delicate flowers cannot tolerate heat during distillation. That time this absolutes are made. अभी इन इंडिया अपने को ज्यादा से ज्यादा सब कुछ अडल्ट्रेटेड मिलेगा. बी रेडी फॉर दैट. ओके. लाइक जैस्मिन का अपन के यहाँ वी गेट एसेंशियल ऑयल, जबकि जैस्मिन एक्चुअली एब्सोल्यूट होता है. ओके. सो बाकी के जो है ट्यूबर रोज, वॉयलेट लीफ, मिमोसा, वो सब अब्रॉड में मिलते हैं, यहाँ इजीली नहीं मिलते. तो गुड एग्जाम्पल इज जैस्मिन. दूसरा है ओकमॉस. तीसरा है वनीला. ओके. अभी अपने यहाँ तो आराम से वनीला का एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली एब्सोल्यूट. तो राइट नाउ आई विल सी, most of my essential oils I've got from Veda oil, Vedas, and Moksha. Moksha ka quality is top class, but it's equally very expensive. हम्म. It's like 30-40% more expensive than Veda. Okay. So what I would suggest is initially आप वेदा से खरीदो जो आपको खरीदना है in small quantity. Then once you think yes you have arrived, तब go for expensive ones. आइडियली अगर आप बहुत एक्सपेंसिव वाले लोगे, डोटेरा एंड ऑल, वहां से तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा. Okay, so initially, and I'm so sure you want to sell it, right? So if you want to sell it, आपको अगर प्राइस सेंसिटिव है आपका मार्केट, तो वेदा इज अ गुड बेट राइट नाउ. Okay, but
क्वालिटी इज लिटिल क्वेश्चनेबल, क्योंकि वो इतना सस्ता है कि वो ही क्वेश्चनेबल लगता है कि इतना सस्ता कैसे कोई बेच सकता है, बट ठीक है, एज ऑफ नाउ वी कैन गो विद दैट. Then we come to resins and balsams. Okay, resins are natural exudations of certain trees. Okay, so benzoin ने कभी यूज किया है? नहीं. Okay, it is a very thick kind of हाँ, सियाम benzoin हम यूज करने वाले, वो वेदा के पास मिलता है. It is, you don't have to dilute it with anything, but it is extremely thick. Okay, it's as thick as कैस्टर ऑयल से भी थिक, समझे? Okay. और मच मोर थिकर देन एक कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल भी गलत एग्जांपल है. फिर मायरा है, फ्रैंकिनसेंस है, लैब्डेनम है, एंड पेरू बेल्सम. मेरे पास पेरू बेल्सम नहीं है, बाकी ये चारों है. ओके, इजीली अवेलेबल. So what it does, it provides body and grounding to blends, especially in woody. Most of the woody kind of fragrance, they are raisins. को आइडिया आ जाएगा जब मैं आगे आगे जाऊंगी. आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? No, no. It is okay, or you want me to move fast? No, it's okay. Okay ना. So what is, how do you know raisins के smell ना sweet होता है, balsamic होता है और smoky रहता है. Okay, and it is kind of a good natural fixative because it is excellent for adding longevity and complexity to your fragrance, to your perfumes. Raisins are the anchor of many natural perfumes, offering slow, comforting dry down that defines a refined base. I'll tell you what is dry down and all. Then we come to tinctures, which I told you. When you infuse it in alcohol, आपको tinctures मिलते हैं. So common tinctures are vanilla, orris, tonka bean, clove, bright petals. Typical ratio है 1:10 is a good ratio. ठीक है, 1 part your botanicals and 10 part your ethanol. मैं आपको बताऊंगी इनिशियली कहाँ से लेने का इथेनॉल एंड ऑल. ओके, आई मेक थिंग्स इजी फॉर यू. थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, पर आपको रेडी मिल जाएगा Yeah. द बेस. ओके, फिर मैं आपको होलसेलर का भी दे देती हूँ आपको. विल गिव यू इन 5 liters. ओके, दैट इज tomorrow after the workshop. I'll share all the No details. problem. Yeah. Then is your carrier oil. ये carrier oil कब आता है? जब आप अत्तर बना रहे हो. ओके, सो the best one that the one I prefer is fractionated coconut oil. So these oils, they don't have a fragrance of their own. Okay. Okay, jojoba, jojoba जो बोलते हैं उसे actually pronounce jojoba. Jojoba and fractionated coconut oil actually don't have any fragrance. Almond oil, sweet almond को थोड़ा सा smell होता है. Apricot kernel का भी अच्छा smell रहता है, but it's way too expensive. So I would suggest go for fractionated coconut oil. So what is fractionated coconut oil? वो coconut oil में से triglycerides, the fats are removed. Okay, so it's non-sticky and it has no fragrance. Are you clear? So what it does, it extends fragrance life on skin, softens deficient grade, protects against irritation. If your budgets are good, you can go with jojoba oil. But I am really happy with fractionated coconut oil because it's not very expensive. Because अपने country का है ना, coconut oil is Hmm. that what we make. So preferably go for Yeah, fraction. actually, jojoba oil is expensive because I use in my skincare the other products, no? And then the cost becomes too expensive. Exactly, expensive हो जाता है and Or just because customer. even if you use 2 ml or 3 ml, it becomes very expensive. Exactly. And a fractionated coconut oil is good to go. मतलब compared to jojoba, it's cheaper. It's not very cheap, but result is very good. तो हम जो Hmm. बनाने वाले, you'll see when I'll send you the samples. And what about that sandalwood carrier oil? Sandalwood oil. सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल होता है, Okay. कैरियर So ऑयल you नहीं होता. can't use कैरियर, this as the note, base note. अरे मैडम अभी आने वाली हूँ मैं, वो आने वाला है, रुको. इट्स बेस अच्छा. नोट. आई नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपको सैंडलवुड का कुछ बनाना है, इतना समझ गई मैं.
करेक्ट ना? नहीं नहीं, आई हैव हर्ड, आई हैव सीन अ लॉट रील्स एंड ऑल अबाउट सैंडलवुड बेस्ड नोट। मैंने देखा है, सो आई वाज जस्ट कंफ्यूज कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है ना, वी आर गोइंग टू मेक परफ्यूम विद दैट। ओके। इट्स वन ऑफ द बेस नोट्स। वी लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू, आप आज बहुत नए नए नाम सुनने वाले हो, ओके? हाँ। सैंडलवुड इज एकदम बेसिक, वी हैव मोर अदर अदर एलॉबरेट वंस। राइट नाउ ओके। मेरे पास 50 एसेंशियल ऑयल्स है। टुमारो यू विल सी दैट, सो दैट्स द रीजन। आप सब नहीं मंगाओगे, आपको जो परफ्यूम बनाना है आप वही मंगाओगे, आप समझे? हम्म। We are going to play with every one, all of them, but you are going to call only the ones that you are going to make. You have to zero it down. ठीक है? Okay, then we come to natural fixatives. They are ingredients that slow the evaporation of volatile oils, lending depth, cohesion, and longevity to a blend. So when you make a perfume, okay, उसमें there is a blend of essential oil, and there is either carrier oil if you are making attar, or there is ethanol. Ethanol is natural alcohol. Okay, that is for sprays. फाइनली जब स्प्रे आप करते हो स्किन पे, यू कैन सी मी राइट? या। ओके, बिकॉज मेरे स्किन पे सिर्फ दिस शेड स्क्रीन एंड यू आर देयर. So when you spray it on your skin, then there is evaporation that happens. Natural fixative, what it does, it reduces the evaporating rate of the perfume from your skin. That's how it हम्म। stays on your skin. इतना basic समझा आपको, right? So examples of natural fixative is vetiver. Vetiver मतलब खस. हम्म। ओके, ये बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल है. इट्स अ बेस नोट. ठीक है, आई विल कम टू द नोट्स. हस. फिर है बेंजोइन, जो मैंने बोला ना, सियाम हम्म। बेंजोइन अपने यहाँ मिलता है इजीली. इट्स ऑल्सो इट्स अ रेजिन. ऑरेंज रूट आई डोंट हैव. लैब्डेनम है. लैब्डेनम हैज अ वियर्ड स्मेल, ओके, तो हम्म। ज्यादा मैं यूज नहीं करने वाली, बट इट इज देयर. हाइब्रिड सीड्स वी डोंट हैव. एंड देन इज योर फेवरेट सैंडलवुड. सैंडलवुड। हाँ, सो दैट्स अ नेचुरल फिक्सेटिव. ठीक है. ओके। तो इट्स गॉट अ वुडी स्मेल. सैंडलवुड सब हम पता है, वी इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ सैंडलवुड. सो सैंडलवुड, यस। बट सब में नहीं डालने का. यू हैव टू मेक अ ब्लेंड बिकॉज वी आर गोइंग टू ओके। लर्न अबाउट 10 फ्रेग्रेंस फैमिलीज. ओके। ओके. Should I एंड note down or will you be giving this to me? ये जो नोट्स मैंने भेजा ना, वही है रिक्रिएटेड. वही है ना? ओके। वही है. फिलहाल आप जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, बट आइडियली इट्स दिस ओनली. सो सी, ऑलवेज रिमेम्बर, परफ्यूम बनाना बहुत सिंपल है. यू जस्ट हैव टू मिक्स, बट दैट नॉलेज व्हाट टू मिक्स, हाउ. So let The me tell you, ratio is actually ratio is more important. more than ratio, it's also what you're blending. ठीक है. So this is like you have to marry everything. What you are blending, the ratio, and always remember, Bhumika, market is saturated. Every other person is selling a perfume. आपने देखा है अभी कितने सारे ओपन ऑन इंस्टाग्राम परफ्यूम. So many Indian brands. There is Fragnote, there is कितने सारे ऑन टॉप ऑफ द माइंड, मुझे याद भी नहीं आ रहे. तो आपको एक हीरो प्रोडक्ट बनाना है. एटलीस्ट सिग्नेचर 3-4 चाहिए आपके. If you want to Mm. start selling, don't sell 10. Initially start with 3-4, at least 2. Okay. And you have to make a hero product. मतलब you have to understand, like अगर ladies ज्यादा है, then if they like floral, jasmine, something to do with jasmine and those very floral fragrant one. फिर एक category men के लिए भी रखना पड़ेगा आपको, which Mm. will be like aquatic and fresh. ओके. एंड आई विल शो यू सिंथेटिक ऑल्सो, वो भी एक बार आप ट्राई करो. दैट आई वोंट बी मेकिंग इट, बट आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट और कहाँ से क्या मंगाने का. वो एकदम चाइल्ड्स प्ले है. इनिशियल यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दैट. एंड ठीक है, लेट्स गो अहेड. So what does natural fixative do? It binds top and heart note together. I will come to all this top, heart and all. It prolongs the dry down. I will talk about dry down also in some time. And adds a sense of completeness to the perfume. ये ना पूरा कंप्लीट कर देता है परफ्यूम ना. जो अगर आप किसी एक्सपर्ट जब वो स्मेल करते हैं ना, दे कैन मेक आउट क्या है इसमें, टॉप नोट क्या है, मिडिल नोट क्या है, बेस नोट. तो वैसे आपको ट्रेन करना पड़ेगा आपके न्यूज को.
टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा। एक तो आई एम एलर्जिक टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप सोचो मुझे कितना ये, बट हम्म। नेचुरल परफ्यूम्स आर अमेजिंग। मतलब दे डिडंट गिव मी हेडेक। इट फॉर मी ना, द सिंथेटिक परफ्यूम्स इट ट्रिगर्स हेडेक ऑल्सो। आप भी देखते होंगे, सम पीपल बोलते हैं ना परफ्यूम मत मारो एंड ऑल। हम्म। नेचुरल परफ्यूम से हार्डली होगा, बहुत कम होगा। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर कैटेगरी, जो मेरे को लोग। माइल्ड परफ्यूम से नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं ना, उससे बहुत हेडेक होता है। हाँ, तो यू अंडर। माइल्ड इज ओके, माइल्ड और लिटिल, बट वेरी स्ट्रॉन्ग नो, आई कांट बेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड यू नो हेडेक क्यों होता है? बिकॉज वो सिंथेटिक होते हैं। हाँ। जो फ्रेग्रेंस जो सिंथेटिक है उसमें इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स इन 100 ml, मतलब। सो दैट्स व्हाट इट ट्रिगर्स, यू नो। बहुत सारे लोगों को तो डिटर्जेंट पाउडर, मतलब कपड़े धोने के बाद भी जो डिटर्जेंट पाउडर का स्मेल होता है कपड़ों में, इफ यू स्मेल इट इट ट्रिगर्स हेडेक हम्म। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। नेचुरल परफ्यूम में मेरे साथ तो नहीं हुआ। आई अज्यूम किसी के साथ ज्यादा होना नहीं चाहिए। सो या, so natural fixatives enrich rather than dominate a blend. एकदम से natural fixative ना, that's why ratio is important. ज्यादा डालोगे तो उसका ही स्मेल आएगा, टॉप और हार्ट नोट समझेंगे ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। So we don't want that. It has to be perfect balance of the ingredients, the ratios, and the whole package has to be perfect. So they create the lingering memory of the scent long after the first note fades. Okay, then we come to solvents and alcohol. Solvents means आप ये essential oil या tinctures या absolute किस में डाल रहे हो, उसको solvent बोलते हैं। ठीक है? So ethanol is the most common solvent in natural perfumery, serving as a carrier for all alcohol based perfumes. जब स्प्रे होता है तब आपको कंपलसरी अल्कोहल से यूज करने हैं। It dissolves essential oils and allows even distribution on the skin. You can either go for sugarcane alcohol or grain alcohol. Grain alcohol expensive रहता है than sugarcane. बहुत नहीं, but difference है. But anytime grain alcohol is preferred. Okay, आप sugarcane भी, मेरे पास दोनों है, but I will be using grain alcohol tomorrow. ठीक है? Guideline is use only high quality odorless ethanol, store in airtight glass bottle, avoid plastic. Plastic हम कहीं नहीं यूज करने वाले। ओके, नॉट इवन फॉर अत्तर, नॉट इवन फॉर स्प्रेज। वो प्लास्टिक को क्या होता है, अल्कोहल या एसेंशियल ऑयल वो ना उसको डिग्रेड करता है, इवेंचुअली वो प्लास्टिक पूरा नरम हो जाता है एंड इट गोज, वो प्लास्टिक कंपाउंड गोज इनटू दैट परफ्यूम। सो इवन व्हेन यू आर सेलिंग, गो फॉर ग्लास ओनली For perfumes, right? फॉर परफ्यूम्स एंड अत्तर ऑल्सो। Okay. नो वे, प्लास्टिक आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ उसका नोजल वोजल होगा प्लास्टिक का, विच इज ओके, बट अदरवाइज नो। नो एक्रेलिक, एक्रेलिक के तो आते भी नहीं कंटेनर्स, बट कंपल्सरी ग्लास। Ethanol not only carries the fragrance but also contribute to its freshness and clarity. Evaporation. So whenever you are handling all this, essential oil is not to is always to be diluted. So better you wear gloves and all if you want to be careful. मतलब ideally कुछ जलेगा वलेगा नहीं, ये सब अमेरिकन या आयरलैंड के गाइडलाइंस है, so they are very careful and all. But ideally work in a well ventilated area, बिकॉज एकदम स्टफी प्लेस होगा तो आपको वो स्मेल सब मिक्स होगा और आपको समझेगा भी नहीं। इट विल गिव यू ब्रीदिंग इश्यूज ऑल्सो। वेयर ग्लव्स, वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस, लेबल ऑल बॉटल्स। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में आपको कुछ नहीं समझेगा। लाइक टुमारो ऑल्सो बिफोर वी मेक आई एम गोइंग टू लेबल एवरीथिंग, तो सब बनने के बाद आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू डू पैकेजिंग, मुझे कुछ नहीं समझेगा। बिकॉज इनिशियली आई विल टॉक अबाउट दैट व्हेन यू मेक द परफ्यूम ना। Okay, all this perfume has a maturation period. Okay, I'll talk about maturation when it comes. All right. Avoid direct contact with undiluted essential oil is most important. Store materials in dark glasses away from sunlight and heat. Heat will really degrade everything. Okay, so all your essential oil has to be in amber glasses. कल मैं दिखाऊंगी मेरे सबके सब 50 के 50 एसेंशियल्स आप पुट इन द एम्बर बॉटल, बिकॉज सनलाइट से वो डिग्रेड हो जाएंगे। Yeah. Okay, now coming to types of natural perfume. Okay, now actual thing is starting.
पहला है बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब बाय स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेग्रेंस, ओके। फर्स्ट इज परफ्यूम एक्सट्रैक्ट, और परफ्यूम बोलते हैं उसको, ओके, परफ्यूम, या यहाँ here you have 20 to 30 percentage of essential oil in a natural base, very long lasting, मतलब 30% of essential oil goes in this. Tomorrow what I'm going to make is going to be around 25%. It will be in between of EDP and perfume, so that you get very strong one. आप according to your need आप फिर ऐसे बना सकते हो. Second is EDP, that is you the perfume. बोलते हैं उसको. How do you pronounce it? The perfume. That is 15 to 20% of natural oils. Most of the perfumes that you find in the market, आप देखो कोई भी सबके ऊपर the perfume लिखा होता है, EDP. आपने देखा है? चेक करो अगर आपके पास अभी कोई परफ्यूम भी है, एनी इम्पोर्टेड एंड ऑल, दे ऑल आर ईडीपी. उसको शॉर्ट में ईडीपी बोलेंगे हम लोग, ओके. इट्स अराउंड 20% ऑफ एसेंशियल ऑयल. देन इट इज ऊदी टॉयलेट, दैट इज ED2, that is 8 to 15% of essential oil. So it's lighter, fresher, everyday wear. Then is Udi cologne, that is 3 to 8% of essential. It's refreshing and short lasting. ज्यादा नहीं होता. After shave and all is cologne जो हम use करते हैं. It's up to 8% only. And then you have the mist and the splashes. The face mist और होते हैं उसमें just 1 to 3%. Ideally 1% ही जाता है. Are you very clear? Yes. क्या? Nothing. इसमें है ना ऐसा वो स्किन केयर जैसा बहुत टेक्निकल नहीं है. ऐसे 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 गाइडलाइंस है इन विच यू हैव टू फॉलो. तो फर्स्ट था बाय कॉन्सेंट्रेशन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बाय बेस, ओके. तो ऑयल बेस इज योर अत्तर्स, वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ. इफ यू आर यूजिंग फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल और इसमें हम एसेंशियल ऑयल ब्लेंड करेंगे तो आपका अत्तर बन गया, करेक्ट. देन इफ यू आर यूजिंग ग्रेन अल्कोहल और शुगर केन अल्कोहल, आपका स्प्रे बन गया. वो क्या, द कॉन्सेंट्रेशन दैट वी स्पोक हियर, when you use it in this base. And the Mm. third is the solid perfumes. Okay, solid perfumes are that we are not going to do, but if you are going to make solid lotion bars, उसमें अगर आप ये perfumes डालते हैं, not perfumes, sorry, the essential oil blends, तो आपका solid perfume हो गया. That's it. If you want, I will give you solid perfume का formulation. It's very simple. But since you are vegan, beeswax आता है इसमें, सिर्फ कैंडिलेला से That's नहीं होगा. हाँ, कैंडिलेला और वैसे that's भी okay. सॉलिड परफ्यूम एज सच उसका मार्केट बहुत छोटा है. इट्स लाइक नॉट वेरी पीपल लाइक टचिंग इट एंड देन वो, इट्स लाइक अ क्रीम anhydrous. Mm. Then there is by style of composition, okay. So there is single note perfumes. So एक ही रहेगा, रोज परफ्यूम या जास्मिन या सैंडलवुड, उसको सोलिफ्लोरस बोलते हैं, सिंगल नोट. फिर है अकॉर्ड्स. Accords are a blend of multiple essential oil, creating a unique note family. I will talk about more, but ये basic आप समझ लीजिए. Accords are multiple essential oil within a family of perfumes. Like for example, citrus accord. Citrus में bergamot आएगा, grapefruit आएगा as a top note. Middle note will be something else. So that's how you make a accord. Okay. ये थोड़ा स्टडी है, ये मैं कवर भी करूंगी, पर आपको भी थोड़ा अपना खुद का रिसर्च भी करना पड़ेगा. Then there are some natural versions like gourmet. Gourmet something 20 साल पहले, 20 नहीं 30 साल पहले आया है, 1990s में. gourmet as a gourmet as a perfume category was created. Specifically, it is made with vanilla. Okay, so gourmet is food, right? So anything that smells like a hot chocolate, Mm. cold coffee, vanilla, that is the gourmet family. साइफो, ओरिएंटल, फूजेर, गोरमैट, इसके बारे में बताऊंगी मैं, डोंट वरी. ऑल दिस आर न्यू वर्ड्स टू यू, राइट? Never heard. हाँ, तो ये सब कुछ नया है. देन यू कम टू पर्पस, व्हाई यू वांट इट. सो some people like it for therapy, some like a perfume which is artisan, some are like seasonal perfumes like summer,
समर में आप अलग परफ्यूम यूज करते हो, रिफ्रेशिंग एंड लाइट, विंटर्स में मोर वार्म, रेनी में एक अलग. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक इट विद द पर्पस ऑल्सो. तो ये जब बनाएंगे आपको, आप जब परफ्यूम बनाओगे, यू हैव टू वर्क लाइक अ डिजाइनर. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक ऐसे ही बना दिया, ऐसे कुछ भी मिक्स किया नहीं. यू हैव टू थिंक लाइक अ डिजाइनर, एंड इन दिस 2 days वी आर गोइंग टू वर्क टुवर्ड्स दैट. डोंट वरी, इट इज जस्ट अ स्टार्ट. अब आ रहा है बहुत. देयर आर मोर देन, पता नहीं, 50 या 60 स्लाइड्स. Okay, now I'm going to come to the pyramid, fragrance pyramid. It's very important. Okay. So there is a top note, there is a heart. Heart matlab middle note. Middle note bolo ya heart note bolo, and there is base note. Okay. So this layers top, heart and base. आपको रट्टा मारना है. ठीक है. As a now you have to talk like a perfumer. You have to be, you know, you have to just forget sandalwood, rose and all. थोड़े उभरे हुए नोट्स की बातें करनी पड़ेगी आपको. If at all you are talking to someone and all. Uh, So it's a complex or simple structure. Okay, every perfume, whether simple or complex, is structured like a musical composition. Okay, how music has a melody, harmony, rhythm. Fragrance has top, heart, and bass. Together, when they come together, you get a perfume. How it works, I will come to it. Uh, so natural perfumes, so synthetic जो है ना, उसमें भी होता है टॉप नोट, मिडिल एंड बेस. ओके, बिकॉज जो परफ्यूम है वो उनके सिंथेटिक रहते हैं, हमारे नेचुरल रहते हैं एसेंशियल ऑयल. सिंथेटिक वंस हैज अ फिक्स्ड, ये होता है कि जब मैं मारूंगा तब इतना स्मेल आएगा, ऐसा स्मेल आएगा. आफ्टर सम टाइम, आधे घंटे, मिडिल नोट विल कम आउट विच विल बी दिस, एंड देन द ड्राई डाउन बेस नोट. नेचुरल परफ्यूम समटाइम्स इट्स डायनेमिक, इट विल एक्ट लिटिल डिफरेंट. मतलब जैसे स्ट्रक्चर्ड है वैसा ही नहीं चलेगा, वो थोड़ा बीच में डाइवर्ट होगा, विच इज ओके. दैट्स व्हाई इट्स नेचुरल, राइट? So they move through these stages more organically than synthetics, revealing subtle changes with each passing hour. So that's why natural perfume acts little different on your skin than the synthetic ones. Okay, now I'm talking of the first, that is top note. तो टॉप नोट इज द फर्स्ट इंप्रेशन. जब अगर भूमिका एक स्प्रे मार के आ रही है, एक परफ्यूम मार के आ रही है, वो जैसे ही रूम में आएगी, तो फर्स्ट स्मेल दैट हिट्स मी इज द टॉप नोट. ठीक है. तो अगर उस परफ्यूम में लैवेंडर है, एग्जांपल, एकदम बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, इस लैवेंडर इज वन ऑफ द टॉप नोट इन दैट. आई विल स्मेल दैट लैवेंडर फर्स्ट. ओके, इतना बेसिक समझा आपको? उसका जो Hmm. टॉप नोट जो है वो आपको सबसे पहले स्मेल आएगा. Top notes are the first scents that reach the nose when a perfume is applied. They are light, bright, and volatile. Volatile means बहुत जल्दी उड़ जाता है. ठीक है. Setting the tone and mood of the fragrance. इसका evaporation time है 10 to 30 minutes. That's it. Not more than 30 minutes. So if you are wearing a perfume, you are coming in a room. मुझे initially it will hit me, but after 10 15 minutes वो smell नहीं आएगा मुझे. वो first जो hit होता है, that is your top note. ठीक है. So character is a crisp, zesty, fleeting. जो फट से that smell you get is the top note. Typical ingredients of top notes are bergamot, lemon, lime, grapefruit, eucalyptus, peppermint, sweet orange. All this halka fulka. Lavender is also a typical top note. The top note is to draw the wearer in. It's the initial sparkle that Hmm. introduces the perfume story. इतना clear हुआ ये? Yeah, I'm moving up. If I'm fast, let me know. Then comes the heart note. That is actually the soul of your perfume. The heart note. Okay, that is the middle note. जब वो 10 15 मिनट के बाद जब टॉप नोट फेड हो जाता है, वो निकल जाएगा, वो स्मेल नहीं आएगा आपको, तब हार्ट नोट आएगा. ओके. इट फॉर्म्स द कोर आइडेंटिटी ऑफ द परफ्यूम. दे आर रिचर, स्मूथर एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फ्लीटिंग टॉप एंड द लास्टिंग बेस. आप समझे? वो टॉप नोट और बेस नोट को कनेक्ट करता है, द हार्ट नोट. उसका इवेपरेशन टाइम इज 2 to 4 hours. वो रहता है. इट्स द लॉन्गेस्ट दैट स्टेज एक्चुअली, द स्मेल. हाँ. Purpose is to express the main theme and personality of the scent.
तो आपका जो मेन कोर द सोल है वो इस हार्ट नोट में रहेगा. टिपिकल इंग्रेडिएंट्स आर लैवेंडर. ओके, आई एम सो सॉरी, लैवेंडर दोनों में आता है. इट्स अ टॉप ऑल्सो, इट्स अ मिडल ऑल्सो. Some people say it's top something, some people say it's middle, but I think it is a top note. It's not a middle note. जेरेनियम, रोज, नेरोली, लैंग लैंग, जैस्मिन, क्लेरी सेज, ये देखो ये सब फ्लोरल फैमिली के हैं. एंड दे हम्म. गिव यू दैट, यू नो, द सोल ऑफ द परफ्यूम. दैट्स योर हार्ट नोट. Heart of the perfume is where its emotion resides. It carries warmth, balance, harmonizing the freshness above and depth below. Okay, then we come to the base note. Base note appears once the top and heart has evaporated. Top और heart जब निकल जाते हैं तब base note आ जाता है. They form the foundation of the perfume, giving it depth, warmth, and longevity. Also serve, so most of the base notes are also natural fixatives. ठीक है, दे आर द फाउंडेशन. वो पकड़ के रखते हैं पूरे परफ्यूम को एंड तक. they they serve as fixatives, anchoring the light elements of the composition. इसका इवेपोरेशन टाइम है 6 to 24 hours. 24 hours तक हार्डली जाता है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग ग्रेट गुड क्वालिटी बेस नोट्स. बिकॉज बेस नोट्स एसेंशियल ऑयल्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव. ठीक है, आप जब प्राइस कंपेयर करोगे ना, शॉक हो जाओगे. लाइक सैंडलवुड, वेटिवर, खस, देन पचोली, फ्रैंकिंसेंस, ये महंगे हैं. हम्म. They're much more expensive than your orange, your lavender, your lang langs. आप समझे? Because base notes are, they're thick, they're rich. So the purpose is to provide richness, stability, and lasting power. They are dense, they are warm, they are grounding. So most of your raisins, your absolutes जो मैंने बात की थी, वो सब इसमें आते हैं, base notes में आते हैं. The typical ingredients are patchouli, vetiver, sandalwood, frankincense. फ्रैंकिनसेंस मतलब आपका धूप, जो धूप का होता है ना, हम्म. संभ्रमी. हिंदी वर्ड इज राइट ना, संभ्रमी, दैट फ्रैंकिनसेंस. ओके, वनीला, बेंजोइन, लैब्डेनम, ये सब बेस नोट है. सो बेस नोट इज व्हाट लिंगर्स. इट इज अ मेमोरी ऑफ द परफ्यूम दैट लिव्स बिहाइंड. वेरी क्लियर? एनी डाउट इसमें होगा क्वेश्चन तो पूछो प्लीज. नहीं, अभी तो नहीं है. नहीं है. I think only when I'll make it, I will get it, the doubts. इसमें ना, इट वोंट बी लाइक अ स्किन केयर. आप समझे? सो एवरी टाइम यू डोंट कम रनिंग टू मी, ये ठीक है हम्म. नहीं. यू हैव टू फिगर इट आउट. And then when you figure it out, and then when you have doubt, that time you come to me. You understood ना? Like स्किन केयर, हेयर केयर, वो अलग गेम हो जाता है बिकॉज वो एकदम टेक्निकल है. ये ना हम्म. थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ अ थिंग है. परफ्यूम कैन नेवर गो रॉन्ग. आप कुछ भी बनाओगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको फेंकना पड़ेगा. आप समझे? और एकदम से एकदम ही बकवास तो कुछ नहीं बनाने वाले, ऐसे मैं अज्यूम करती हूँ ना, लाइक समथिंग लाइक इट शुड नॉट. सो दैट्स व्हाई अवॉइड सिट्रोनेला. यू नो व्हाट इज सिट्रोनेला ना? वो हाँ. ओडोमॉस का स्मेल. ओडोमॉस का जो स्मेल है ना, वो सिट्रोनेला है. तो वो सब अवॉइड करो. क्योंकि इंडियंस आर वेरी पर्टिकुलर. अपने को सिट्रोनेला ना, अब्रॉड में ना सिट्रोनेला लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ ओडोमॉस. बचपन से इतना लगाया अपन लोगों ने, वी हेट दैट स्मेल. तो जैसे ही कोई भी वो स्मेल करेगा ना, बोलेगा अरे ये तो ओडोमॉस का स्मेल है. तो स्पेसिफिकली जो ट्रिगर करता है ना मेमोरीज, वो अवॉइड करो इनिशियली. क्योंकि हुआ है, मैंने एक भी यूज किया था तो एवरीवन्स फर्स्ट फीडबैक वाज दिस ओनली. बेसिकली मेरे को फ्लोरल पे ही जाना है. Yeah, great. Florals are superb. Don't worry. Floral we are enough. फ्लोरल के Floral बनाना अत्तर. तो बहुत सिंपल है. सॉरी. Sorry. नहीं, सिर्फ फ्लोरल के अत्तर एंड फ्लोरल के स्प्रेज. आप बना सकते हो. कल हम लेकिन थोड़ा, I'm teaching you, right? You have to learn others also. हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग Yeah, कि yeah. I वो understood उसकी from where सब. you are coming. हाँ. You will love it. Floral तो it's a child walk. वो कोई बड़ी बात नहीं है. But floral में भी ना एकदम ऐसे हटके बनाना. You know, it has to smell like wow. It is just essential, the carrier oil and the essential oil ना for अत्तर. Yeah, but essential oil में which one and how you'll, you How know, to, how that is dry the down. That proportion. exactly. That's how it is. So this is how the pyramid works. Okay, top, first impression, heart, character and body, base, depth and memory. Duration 30 minutes for top note, 30 minutes to 4 hours for heart, and for 4 to 24 hours for base.
नेचर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ना. टॉप नोट इज फ्रेश एंड लाइट. हार्ट इज सॉफ्ट फ्लोरल एरोमेटिक. तो आपके सब फ्लोरल ना हार्ट नोट में ही आते हैं. ठीक है. एंड बेस नोट इज वार्म वुडी रेसिनियस. सो योर क्वेश्चन, आप अगर आपको फ्लोरल बनाने हैं, आप फ्लोरल बना दोगे, एसेंशियल ऑयल डालोगे, पर रहेगा कैसे वो स्मेल, टिकेगा कैसा, तब आपको बेस में डालना होगा. यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस. डीआईवाईज और ट्रेन परफ्यूमर में ये डिफरेंस है. आपको क्या लगता है कि मैं जास्मिन और ये सब डालूंगी हो गया? नहीं होगा. उसके बाद यू नीड अ टॉप नोट ऑल्सो, यू नीड अ हार्ट नोट ऑल्सो, यू नीड अ बेस नोट ऑल्सो. क्लियर? So when formulating, perfumers typically follow an approximate ratio of 30% आपका top note होता है. Ideal, huh? This is a one of the ideal proportion. 30 is your top note, 50 is your heart note, because that's the soul, right? मैंने बोला ना आपका main जो character is your base, is your heart note, and your base is 20%. Hmm. Okay. And of course, these numbers are flexible. A fresh citrus perfume might have a higher proportion. Then you have to take a call how you want to Hmm. go. Just okay. Now, how do you create a balance? Just giving an idea. हाँ, अगर आप जैसे आप बोल रहे हो आपको फ्लोरल बनाना है, फ्रेश, तो यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन. इट्स समथिंग लाइक अ फ्रेश फ्लोरल. तो टॉप नोट विल बी bergamot एंड लेमन. ठीक है, विद दिस परसेंटेज 15 एंड 10%. देन योर हार्ट नोट विल बी रोज एंड जेरेनियम. तो ये आप फ्लोरल रोज रोज कैटेगरी में बना रहे हो. दैट विल बी 25-25, 50% हो गया. करेक्ट. And then you come to base note, which will be sandalwood and vanilla, which is another 25%. Are you clear with this? Yeah. So this structure produces a bright opening floral heart and a smooth, creamy finish. So how will the perfume evolve? Initially, you will get citrus or herbs का एक smell आएगा. Initially, okay. ये literal नहीं है, ये literal नहीं है. मतलब आप मारोगे तो एकदम orange orange ऐसा नहीं है. But this is how typically it will be. Hmm. Then heart phase में warmth of flowers and aromatics will come. Hmm. And then dry down, which is the last base note phase. उसमें आपको earthiness of wood and resin you will get, which Hmm. is steady and comforting. Okay. So when blending, always imagine how your perfume will evolve across these three moments. So this is like a music. You need to be little creative. हाँ, ये एकदम से बोलता है ना ऐसे बनाते. So you have to act like a formulator, right? We are home based formulators now. Perfume. तो आपको सोचना पड़ेगा ये परफ्यूम ऐसा है, फिर वो हाउ फ्रॉम हार्ट मिडिल एंड बेस नोट हाउ इट्स गोइंग टू फ्लो. So fragrance pyramid is a blueprint of every perfume. It Hmm. teaches proportion, patience, and art of restraint. So you have to master this structure, okay? And you will gain control over your story, how you want to go ahead. Okay, now I'm going to the terms, okay? Terms and concepts. So perfumery has its own language, a vocabulary, okay? So a perfumer will talk in a little different language. उसका एकदम same जैसे हम basic बातें करते हैं वैसे नहीं होगा. And even you have to get used to this. Even when you're talking to your customers ना, use all these words. They'll also be highly impressed. को भी लगेगा आपको पता है, and it's good ना. You should use all this kind of language. So we're going to learn accords, notes, sillage, dry down, fixative, and other foundation concepts. You're okay? You want to take a break? No, I'm fine. You're fine, right? So पहला है concept of accord. So accord is the very heart of perfumery. It is the blend of two or more ingredients, okay, that together create a completely new unified scent, one that is more than the sum of its parts. Uh, so what are characteristics of an accord? Feels unified, not fragmented. इसका मतलब मैं बताती हूँ आपको. Has his own personality and olfactory identity. It serves as the building block of more complex perfumes. So examples of accord. हाँ, सो क्या होता है अकॉर्ड सिंपल लैंग्वेज में? अगर आपको एक सिट्रस, okay, अकॉर्ड बनाना है, तो इट विल बी फ्रॉम द सिट्रस फैमिली एज सिंपल लैंग्वेज. इट विल बी लेमन, bergamot, grapefruit, bright sparkling freshness.
तो हमने तीन अलग इंग्रेडिएंट्स लिए, लेमन, बर्गमॉट, ग्रेप फ्रूट, ठीक है, बट दे आर ऑल फ्रॉम द सिट्रस फैमिली, सो दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। वेरी क्लियर? हाँ। तो फ्लोरल में आपका आएगा रोज, जेरेनियम, लैंग लैंग, सॉफ्ट एंड रोमांटिक। तो ये फ्लोरल अकॉर्ड में आया। तो आप ना एकदम फ्लोरल में एकदम से आप कुछ और तीसरा नहीं डाल सकते। हम्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, लाइक रोज में आप लेमन, in that accord, you can't mix a lemon in with rose. Lemon is a citrus accord, rose is a floral accord. So it has to हम्म। be in the same family. It should can't be much. Ideally, it's not. It should not be fragmented. ठीक है? वुडी में आता है या सैंडलवुड या सीडर वुड या पचोली। इसमें डेप्थ आता है, वार्मथ आता है। वुडी मतलब ये सब झाड़ के, वुड के, हम्म। सैंडलवुड, सीडर वुड। फ्लोरल में मोस्टली फ्लावर्स आते हैं। यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक नेचर का अलग अलग अंग लेकर ये अकॉर्ड्स बनते हैं। एम्बर अकॉर्ड में लैब्डेनम आएगा, बेंजोइन आएगा, वनीला आएगा। इट्स वेरी रेसिनियस एंड स्वीट, स्वीट काइंड ऑफ स्मेल है उसका। So in perfumery design, accords can be simple, two or three material, or complex, 10 or more. You understand? It can be really complex also. जो बहुत ही अमेजिंग, इट इज अ ब्रांड कॉल्ड सीक्रेट अल्केमिस्ट, चेक करिए। ये वो है ना, सैमंथा रुथ प्रभु, उसका कंपनी है। सो दे हैव डन हम्म। अ गुड स्टडी ऑन दिस। बोलते हैं नेचुरल, आई डोंट नो कितना नेचुरल है, बट यू चेक दैट, जस्ट चेक द वेबसाइट, और उन्होंने क्लियर अकॉर्ड्स दिए हैं। इस परफ्यूम में ये टॉप है, ये मिडिल है, ये बेस है। तो याद से ये वेबसाइट चेक करना, ठीक है? सीक्रेट अल्केमिस्ट। Every finished perfume is, in essence, a combination of several accords blended seamlessly. So, end of the story is, in perfume there are various accords that are blended, and they should synergize and stay together. Okay, एकदम से रैंडम कोई और नहीं जा सकते। अभी आता है नोट। व्हाट इज अ नोट? और समझा आपको? हम्म। वेरी क्लियर नाउ। व्हाट इज अ नोट? A note is a single scent expression, impression within a perfume. Okay, एक ही स्मेल होता है वो। It's not a blend. It's not like a family. Okay, a single aromatic ingredient like a lavender or sandalwood. So we're just talking about initial, just one ingredient. It could be a lemon, it could be a peppermint, rose, jasmine, lavender. That is called note. Simple. समझा आप? रोज का नोट है, मतलब रोज का एसेंशियल ऑयल। Then we come to fixative. Fixative is an ingredient that helps slows down the evaporation of volatile materials. In natural perfumery, fixatives are aromatic substance in their own right. They are base note also and they are fixatives also. They are rich and they are grounding. Examples again, vetiver, benzoin, labdanum, sandalwood, orris root, ambrate. Functions of a fixative is reduces volatility of lighter oils. Volatility matlab the way the rate at the rate at which it evaporates. ओके, तो फिक्सेटिव्स क्या करते हैं? जो लाइटर ऑयल्स है, एग्जाम्पल सिट्रस है, रोज है, वो उसका भी उठने, इवेपोरेशन रेट कम कर देता है। ठीक है? इट प्रोलॉन्ग्स द ड्राई डाउन, एड्स बॉडी एंड कोहेंशन, मतलब it blends the whole thing, it marries the whole thing. And natural fixative works through their own aromatic weight, not through synthetic stabilizing agent. They enrich the perfume instead of masking it. And it should not mask the whole perfume. So since you like sandalwood, ज्यादा मत डालना, full perfume sandalwood का ही smell आएगा। That's not the idea. We don't want absolutely sandalwood. मतलब I understand you like sandalwood, but ideally it should be a perfume. It should have a blend of हम्म। everything. हाँ, स्ट्रॉन्ग होगा, सैंडलवुड परफ्यूम विल स्मेल लाइक अ सैंडलवुड, बट इट शुड हैव द layers also. Okay, now we are coming to sillage. What is a sillage? It's a French term meaning wake or trail. तो आप, so what is sillage in simple language is, आप अगर रूम में आते हो, जैसे आदमी आता है, तो जो और चला जाता है, इनफैक्ट वो ट्रेल, आप रूम से निकलते हो, फिर भी वो जो स्मेल आता है ना, उसको सिलेज बोलते हैं। You must have seen some perfumes when people pass and you can get that whiff. हम्म। Okay.
So high sillage perfumes are diffusive and noticeable from a distance, and there are low sillage perfumes also, जो सिर्फ स्किन के पास है, मतलब एकदम नजदीक, अगर कोई कान में कुछ बोलने आता है तब आपको स्मेल आता है, उसका लो सिलेज है. इट डजंट मीन कि खराब है. सम पीपल डोंट लाइक दैट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल कि मैं आऊं और रूम में अनाउंस हो जाए. So there is high sillage and there is low sillage. So how what influences the sillage? It's type of base. Alcohol, जब आप स्प्रे बनाओगे तब सिलेज ज्यादा होगा. अत्तर बनाओगे ना, इट्स नियर टू स्किन ऑब्वियसली ना, तो somebody comes near to your ears to talk, तब आपको स्मेल आएगा उसने अगर कुछ लगाया है. पर अगर अल्कोहल का है तो वो जब रूम में आएगा यू कैन स्टिल स्मेल. Then of course concentration of essential oil, it depends on EDP और EDT. If it's EDP तो आपको ज्यादा स्मेल आएगा, EDT में कम concentration होता है. Then type of notes, citrus फटाफट उड़ जाता है, resin which is a base note will stay more. And in natural perfumery, silage is little softer. It won't be strong like the synthetic ones. Like कोई अगर cool waters लगा रहा है डेविड ऑफ तो वो ज्यादा स्मेल आएगा, वो सिंथेटिक. आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इट विल बी मोर सटल. यू क्लियर? Then we come to longevity. Longevity describes how long a perfume remains on skin or clothing after application. ठीक है. Normally attar is not put on your clothes, it will stain your clothes. अत्तर जो है ना, जो बनाएंगे आप, वो स्किन के ऊपर डायरेक्ट जाता है. हम्म. ओके, रोल ऑन में आई विल गिव यू इन अ रोल ऑन फॉर्म. वो कपड़ों पे अवॉइड करिए बिकॉज कपड़ों पे ऑयल के स्टेन्स रह जाएंगे. Every attar has that problem. Okay, perfume, whereas spray you can use it on your clothes, skin पे avoid करना, कम डालो. तो नेचुरल परफ्यूम का और एक फायदा ये है कि आप इधर इधर भी मार सकते हो. नॉर्मली सिंथेटिक वंस दे से इधर नहीं मारने का, यहाँ थायराइड है एंड डिस्टर्ब्स द हार्मोन्स एंड ऑल. whereas natural it is safe to do it, don't tell them to put it, but अगर कभी वो लोग लगाते भी है इधर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके. So longevity depends on the strength of the base note. Yeah, base note plays an important role for longevity. The quality of fixative use, type of perfume base, that is oil or alcohol. Oil stays more than alcohol, and skin type and environment also. Okay, so normally बहुत गर्मी में ना थोड़ा smell वो dissipate होता है, ठंडी में थोड़ा it doesn't spread that much. So general guide is alcohol perfume lasts 4 to 8 hours. Oil perfume can last 6 to 12 hours. Okay, with strong base note and all. And proper maturation also enhances longevity by allowing the molecules to integrate more fully. I will talk about maturation. इतना समझा? Then we come to projection. ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए. ओके, ये होने के बाद ये पीपीटी में भेज रही हूँ आपको, एक बार रिवाइज करना कल के पहले. ठीक है. So what is projection? Projection refers to how far and how strong a perfume radiates from the wearer. ये अलग है, इट्स नॉट लाइक सिलेज. सिलेज मतलब आप जाओगे और जो स्मेल आता है दैट इज सिलेज. प्रोजेक्शन मतलब आप इधर खड़े हो और आपसे दूसरा आदमी कितना दूर खड़ा है और उसको आपका परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं. प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मल इन परफ्यूमरी. अगेन नेचुरल परफ्यूम में प्रोजेक्शन थोड़ा कम रहता है, इट्स नॉट लाइक द सिंथेटिक वंस, but yes, it is important. In simple word, it is the radius or the reach of the scent. How easily others can smell it without coming too close. सामने वाला अगर बोलेगा कि अरे अच्छा कुछ स्मेल आ रहा है, मतलब समझो उसका प्रोजेक्शन इज गुड. अगर जबरदस्ती आपको बताना पड़ रहा है, देखो मैंने ये स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, देखो देखो, तो उसकी प्रोजेक्शन इज क्वेश्चनेबल. ठीक है. If longevity describes how long a perfume lasts, then projection describes how far it travels while it lasts. Clear? Any query? No. Okay, now we come to dry down. So dry down is the final phase of a perfume's life cycle. The stage that reveals the true character and memory of the scent. जो last तक रहता है, जो smell आता है, उसको dry down बोलते हैं. After the top and heart note fades, जो base note बचता है उसको dry down बोलते हैं. The deeper base note material it emerges, and that is the dry down. This phase can last from several hours to full day.
डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट। देखो कभी कभी ना एक ऐसे परफ्यूम्स होते हैं ना 2-3 दिन के बाद भी स्मेल आता है, नॉट ऑन योर स्किन बट एटलीस्ट कपड़ों पे कभी तो मारा होगा आपको, कभी हुआ है एक्सपीरियंस, दैट इज द ड्राई डाउन ना, एक फेड स्मेल होता है, यू अंडरस्टैंड, या इट इज या मैंने वो परफ्यूम मारा था उसका, दैट इज द ड्राई डाउन। सो व्हाई इट मैटर्स, ड्राई डाउन डिफाइंस द क्वालिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ अ परफ्यूम। So let me tell you, Dhumika, very clearly. Your perfume should smell good and should last also. If it's not long lasting ना, वो एक बार लेगा आदमी वापस नहीं लेने वाला। तो मैं भी जब बिफोर लर्निंग ऑल दिस मैंने भी डीआईवाई किया था ना, अच्छे थे परफ्यूम्स तो अच्छे थे बट वो रहते नहीं थे। ओके सी इट्स लाइक सिंथेटिक वंस लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं रहने वाला, बिकॉज सिंथेटिक इट्स बायो हैजर्ड, लेट मी टेल यू। इट्स इज बुलशिट इफ यू वांट अ परफ्यूम व्हिच शुड लास्ट 8 to 12 आवर्स। 8 आवर्स तक तो हम लोग का ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 घंटा, दैट इज ऑन द हायर साइड, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एसेंशियल ऑयल, बट इट हैज टू स्टे। दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग परफ्यूम्स, राइट? एंड विद Mumbai heat and all, lot of people use it to dry, to mask their sweat and all. वो तो all deadly combination होता है, या perfume mixed with the sweat, that smell वो कुछ और, but it has to smell good. Hmm. That's very important. Okay, now I come to diffusion. The diffusion is the ability of a perfume to project into the air and perceived by others. It measures how far the scent travels from the wearer. This is similar to projection. Okay, but diffusion is uh, it's like, how do I tell you exactly? It is more stronger than projection. Okay, it is like it's similar to projection, but वो थोड़ा the perfume diffuses in the air. This is more for the synthetic ones. Natural में we stick to the projection. You're clear? क्या confused? No, दोनों clear. सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, but diffusion में क्या होता है? The molecules of the perfume travel more far, more scattered, and high diffusion is bright volatile material. This has to do more with the material, the molecules. That's why it has to do with the synthetic ones. ठीक है, ये natural में ज्यादा नहीं आएगा. Then there is evaporation curve. ये सब technical है, okay? Just for you to understand. Evaporation curve describes how quickly or slowly the various ingredient in a perfume evaporates. It is directly linked to the concept of fragrance pyramid. So top notes will evaporate quickly. Evaporation curve of top note is fast, in short. ठीक है? And heart note moderately and base note very slowly. This is the evaporation curve, just for your understanding. Top note बहुत जल्दी evaporate होता है, heart note moderate, base note बहुत slow. ठीक है? Then I come to, okay, this is a repeat of what we had done. Again, I'll just talk about it. So when you do UD cologne is 2 to 5%, UD toilet 5 to 10%, UD perfume 5 to 15 to 25, perfume is 25 to 35, and oil perfume is 10 to 20%. It's the same thing. Now we come to accord building versus blending. These are two distinct stages of perfumery practice. Accord building is combining a small number of ingredients to create a single unified scent. For example, a floral accord आपको अगर बनाना है, तो आप फ्लोरल के जैस्मिन, लैंग लैंग, द हार्ट नोट यू आर गोइंग टू टेक एंड यू आर गोइंग टू मेक दैट अकॉर्ड, फ्लोरल अकॉर्ड. जब ब्लेंडिंग होगा ना, तो मल्टीपल अकॉर्ड्स एंड नोट्स विल कम टुगेदर टू कंप्लीट अ परफ्यूम कंपोजिशन. मतलब आप एक फ्लोरल अकॉर्ड भी लोगे, आप सिट्रस अकॉर्ड भी लोगे, यू विल टेक अ वुडी अकॉर्ड एंड यू आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लेक्स परफ्यूम. थोड़ा समझ रहा है आपको थोड़ा बहुत? हाँ, डोंट वरी, इट्स नथिंग टू वरी. ये थ्योरी थोड़ा अब ये है, जब बनाए नहीं जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी चाइल्ड्स प्ले. ओके, एंड यू विल टेक टाइम टू बिल्ड दिस. हाँ, इट्स नॉट लाइक, एंड यू हैव टू कीप लर्निंग. चैट जीपीटी और गूगल पे आपको इसका रिसर्च करते रहना पड़ेगा. इंटरनेशनल सिंथेटिक के भी टॉप, मिडिल और बेस नोट्स होते हैं, तो यू कैन स्टडी देम ऑल्सो. लाइक फॉर एग्जाम्पल कूल वाटर्स नेचुरल है,
सिंथेटिक है, पर उसका नेचुरल का भी थोड़ा बहुत 19-20 आप बना सकते हो. वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, बट यू कैन मेक इट. So mastering accord building is the key to creativity. Building, blending builds upon the mastery to create finished perfumes. ठीक है. Then we come to mod is short for modification. आप जब भी परफ्यूम बनाओगे, पहला एक टेस्टर बनेगा, वो फाइनल नहीं रहेगा. हाँ, लेट मी टेल यू, आप छोटा छोटा बनाओगे, हम्म. एकदम छोटा, बिकॉज देन यू गोट टू स्मेल इट, ओके, ऑन द फ्रेग्रेंस स्ट्रिप. फिर उसके वेरिएशंस आप बनाओगे, आप खुद स्मेल करोगे, और देयर समथिंग यू गेट नोज ब्लाइंडनेस. 2-3 बार परफ्यूम स्मेल करोगे ना, आपको बाद में स्मेल नहीं आएगा. सो दैट्स व्हेन दे यूज दैट कॉफी बीन्स. आपने देखा होगा ना, दे गिव यू कॉफी बीन्स टू स्मेल, बट इट डजंट डू एनीथिंग, और आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपको क्या करना है, जब आप बहुत कुछ स्मेल करोगे ना, देन यू कांट स्मेल, और सब कुछ सिमिलर लगेगा आपको. यू हैव टू गो टू योर balcony एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर फॉर 5-10 minutes. Then your nose resets. Are you clear? So when you are making a perfume, if you are confused, then you show that to your husband or in-laws or whoever. आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? बिकॉज अलोन वन पर्सन, एटलीस्ट मुझे तो नहीं जमता. माई नोज आर लाइक, जल्दी से कॉन्क ऑफ हो जाते हैं. तो यू हैव टू कीप मॉडिफाइंग योर न्यू ब्लेंड्स. अभी जो हम कल बनाने वाले वो प्रूवन है, वो तो मैंने बना चुकी हूँ, प्रूव हो चुका. बट यू हैव टू मेक योर ओन ब्लेंड्स ऑल्सो, राइट? Whichever you like, your favorite and all, and you have to note down everything, percentage wise, everything, huh? परसेंटेज, ग्राम्स, एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन बाद में. क्योंकि एकदम मास्टर आप क्रिएट करोगे, और अगर वो नोट नहीं किया ना, आप वापस वो क्रिएट ही नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट, मतलब कुछ भी करो, आपको याद ही नहीं आएगा आपने कितना किस परसेंटेज में डाला था. एंड इवन 1-2% डिफरेंस ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू द स्मेल. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मैसरेशन एंड एजिंग. तो जो Can you give me a minute? I want to use the washroom. yeah. Can you see the screen? Yeah. Yeah. So what is maceration? So whatever perfume you're going to make, like tomorrow, we are going to make 5 of sprays and 5 of Atar. आपको ये 1 महीना रखना है. Okay, that's why I मतलब. didn't break. You have to keep it to mature. You can't sell it or gift it. अच्छा, हाँ हाँ. हाँ, द रीजन बीइंग, उसको मैसरेशन बोलते हैं, उसको एजिंग प्रोसेस बोलते हैं. वाइन कैसे आप एजिंग करते हो, विस्की कैसे रखते हो एजिंग के लिए. सो इट्स नॉट लाइक सोप, कोल्ड प्रोसेस जैसा क्योरिंग नहीं, बट इसको क्योरिंग ही बोल सकते हैं. बिकॉज जब आप अल्कोहल परफ्यूम बनाते हो ना, तो इनिशियली अल्कोहल का स्मेल ज्यादा आएगा आपको, इथेनॉल का. हम्म. ओके. तो अराउंड 4 वीक तो लगते हैं फॉर दैट स्मेल टू इवेपोरेट. सो आफ्टर 4 वीक्स व्हाट यू गेट इज अ वेरी द प्रॉपर स्मेल ऑफ द परफ्यूम. आर यू वेरी क्लियर? तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल स्प्रेस बेचने हैं, तो आपको वो 1 महीने पहले बना के रखने पड़ेंगे इन एन एम्बर ओके. ग्लास. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. ऑयल परफ्यूम को ज्यादा ज्यादा 1 से 2 हफ्ता, मैं तो इमीडिएटली यूज करती हूँ. बिकॉज वाई 1-2 हफ्ता? द इसेंशियल ऑयल के मॉलिक्यूल्स, वो कैरियर ऑयल के मॉलिक्यूल्स के साथ मस्त पे ब्लेंड होना चाहिए. देन यू गेट So दैट these प्रॉपर. basically oil perfumes are attar, right? यस. ऑयल परफ्यूम मतलब अत्तर. ओके. सो उसको भी ना 2 हफ्ता तो मिनिमम रखो, मजा आएगा, मतलब इन्फ्यूज. इट्स गुड. इन्फ्यूज होने के लिए. इन्फ्यूज होने की मतलब, सी यू कैन सेल इट नेक्स्ट डे ऑल्सो. अल्कोहल जैसा प्रॉब्लम नहीं है अत्तर में. ठीक है, बट जब आप बना के रखते हो ना, इन 2-3 वीक्स ना, मैं तो 4 वीक्स रखती हूँ अत्तर में. यू नो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, इट ब्लेंड्स विद द कैरियर ऑयल, व्हाटएवर, फ्रैक्शनेटेड कोकोनट और होबा, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ वो प्रॉपर इन्फ्यूज हो जाते हैं. एंड देन एक्चुअल यू गेट द डिफ्यूजन, जो बोलते हैं ना सिलेज.
इट गिव्स यू द ट्रू नेचर ऑफ द परफ्यूम। तो अत्तर मिनिमम 2 हफ्ता तो रखो ही। ठीक है, आप इमीडिएटली भी कर सकते हो, बेच सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट या फर्क पड़ता है। एंड कल बताऊंगी मैं, वैसे भी जब आप मिक्स भी करते हो परफ्यूम्स ना, उसको ना बहुत अच्छी तरह यू हैव टू विद अ ग्लास रॉड यू हैव टू मिक्स इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ अल्कोहल एंड ऑयल। नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स है ना, दे हैव दैट मैग्नेटिक स्टरर। हम्म। आपने देखा है मैग्नेटिक स्टरर? तो इट्स अ मशीन होती है छोटी सी। ओके, उस पे फॉर एग्जाम्पल बीकर जाता है और उसके अंदर ना इसे कैप्सूल जाता है मैग्नेटिक, और वो घूमता रहता है। लाइक अ ब्लेंडर। हाँ, ब्लेंडर, बट इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक स्टरर। ओके, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, आपको लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी नहीं है, वी डोंट डू ऑल दिस काम जाम। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स ना, थोड़ी अपने पास इतने सारे ऑर्डर्स तो और वो है। नॉर्मल स्पून से नहीं ब्लेंड होता है? होता है, तो मैग्नेटिक स्टरर से कंटिन्यूस होता रहता है आधा 1 घंटा। नहीं ठीक है, नहीं, यू नो दैट क्रीम के लिए वो स्पैचुला आपने बोला था आप कर छोटा, सकते हो, यू कैन यूज इट। जो वो यूज। स्पॉटुला है उससे ही आप हाँ। मिक्स करो, दैट इज ओके, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। बट आई एम टेलिंग यू लिटिल प्रोफेशनल वे, जब यू कैन कनेक्ट बैक विथ मी, अगर लेटर ऑन अगर आपको मैग्नेटिक स्टर यूज हम्म। करना है, जरूरत नहीं पड़ेगी आप तो। आई डोंट, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करती इस सब में। इवन आई एम गोइंग टू लॉन्च माई ब्रांड वेरी सून। वो मैं कब से बोल रही हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, बट व्हाट आई वाज सेइंग इज हॉट इट इज। Yeah, this is just for your information. Okay, there's something called magnetic stirrer which professionals use. We can use any clean spatula, not chamcha from the kitchen. Okay, अपना स्किन केयर वाला spatula. You can use any chamcha also, but ideally मत करो वो। वो हम्म। जो स्किन केयर जो sterilized है, you have to clean it with your rubbing alcohol and then use it. ठीक है? So maceration, also called aging, is the resting period that allows all perfume components to merge into a smooth, coherent scent. आप समझे, ये टॉप, हार्ट और बेस नोट, उनको सिनर्जाइज होने के लिए ये मेच्योरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। It takes time, but end of the day, what you get is amazing perfume. And for natural perfumes, alcohol perfumes are aged for 3 to 4 weeks. Oil perfumes are aged for 1 to 2 weeks. During maceration, harsh एजेस सॉफ्टन एंड हार्मनी, जो जो एकदम ना ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना, एकदम से टेढ़े लगते हैं, वो भी सॉफ्ट हो जाता है, मेलो डाउन हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस मैचरेशन इज इम्पोर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ स्मेल ऑफ सिनेमन एग्जांपल, हम्म। सिनेमन इज अ मसाला, राइट? उसका स्मेल भी थोड़ा एक अलग सा कट करता है, वो हार्मोनाइज हो जाता है, ब्लेंड्स एंड इट हार्मोनाइजेस विद द रेस्ट ऑफ हम्म। द परफ्यूम। The perfume becomes more rounder, more polished and balanced. Clear maceration and aging. Then what is a throw? Throw is an informal term for how far a perfume scent can be detected from the wearer. It's similar like that sillage only, not sillage, projection. आदमी कितना दूर है, पर वो थ्रो ऑफ द परफ्यूम बोलते हैं हम उसको। It relates closely to sillage and diffusion, but is often used in practical evaluation, which typically we are not going to do. ये technical जब होता है ना, that time they talk about the throw of the perfume. Natural perfumes typically have a gentle throw. दे इनवाइट rather than अनाउंस। आप नेचुरल परफ्यूम में वो एकदम लाउड नहीं रहेगा, जैसे वो चार्ली परफ्यूम और चीप वाले होते हैं ना, एकदम से एकदम लाउड स्मेल। इट वोंट बी लाइक दैट, इट्स मोर सटल एंड ग्राउंडेड। सो दिस टर्म्स फ्रॉम द वर्किंग ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू कवर द फ्रेग्रेंस फैमिलीज नाउ। अभी तक का समझा मैंने कुछ बोला वो? थोड़ा बहुत दिमाग में गया है ना? Yeah. So every perfume belongs to a fragrance family, and that a classification system that groups scents based on their dominant olfactory character. So that fragrant family is the main character of that family. ठीक है? So these families help perfumers design balanced composition and helps wearer identify the scent. मतलब जिसको, जैसे आपने बोला आपको फ्लोरल पसंद है, तो अगर रोज है तो यू से हाँ इसमें रोज है, सो वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। ऐसा परफ्यूम मत बनाओ कि क्या है कुछ समझ ही नहीं रहा।
सामने वाले को समझने चाहिए. सो व्हेन यू डिजाइन अ परफ्यूम, जब आप ब्लॉटिंग पेपर, दैट्स फ्रेग्रेंस पेपर पे आप एग्जांपल यू आर गिविंग इट योर हस्बैंड, टेल हिम गेस करो क्या है. लेट हिम नॉट नो एनीथिंग, बट you'll get an idea कि where your perfume is going. So first is your citrus family. It is fresh and sparkling. It's bright, refreshing, uplifting. Typical citrus family notes are bergamot, lemon, lime, grapefruit, orange, petit grain, neroli. ये सब है अपने पास. Okay, this all are top note. They are quick to evaporate, but they give an instant burst of freshness. Often used in colognes and summer blends. Pairs well with aromatic greens or floral notes for balance. So examples in natural perfumery is lavender, लेमन लैवेंडर कलोन होता है, बर्गोमॉट पेटिट ग्रीन का एक ब्लेंड रहता है, नेरोली सीडरवुड का यू फ्रेंच रहेगा. यू फ्रेंच इज आल्सो लाइक 1-2% ऑफ द, इट्स टाइप ऑफ अ परफ्यूम, बट ज्यादा हमारे अपने यहाँ यूज नहीं होता. शुड आई मूव? Yeah, just 1 minute, huh? या. Hmm. Yeah. Then we go to floral family. Okay, it's romantic and versatile. It is the largest and most diverse family. It's built around scent of flowers, ranging from soft and powdery to rich and heady. सब कैटेगरीज भी होते हैं उसमें. एक होता है सिंगल फ्लोरल विच इज सॉलीफ्लावर. एक ही फ्लावर डोमिनेट करता है. इट कुड बी अ रोज और अ जैस्मिन एग्जांपल. फिर होता है बुके फ्लोरल. इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फ्लोरल नोट्स. एक होता है ग्रीन फ्लोरल. ओके, दैट इज अ ब्लेंड essential oil called galbanum. Okay, so it adds freshness with galbanum or leafy notes. फिर floral oriental मतलब floral heart with warm resin or spices. So you have a floral heart note and you'll have a base note which is resin or a spice. So typical notes are rose, jasmine, lang lang, lavender, tuberose, geranium, orange blossom. So character is feminine, romantic, versatile. Everyone loves it. So example a rose or jasmine attar hai, lang lang sandalwood perfume hai. There is a lavender geranium blend. You clear? Should I move? 1 minute, huh? Yeah. Hmm. Then we come to woody family. It is earthy and grounding. It's warm, rich and elegant. Categories में आता है dry wood which is cedar. So ये wood category, okay? Cedar wood, vetiver, patchouli, सब dry wood. आपने कभी खस का झाड़ देखा है? तो इट्स गूगल भी करोगे ना तो खस के ना ऐसे ड्राइड ग्रास मिलते हैं. ओके, सो इट्स अ वुड फैमिली. क्रीमी वुड में आएगा सैंडलवुड, एमिरिस. एरोमेटिक वुड्स में ब्लेंड्स विद हर्ब्स एंड सिट्रस. सो टिपिकल नोट्स आर सीडरवुड, सैंडलवुड, वेटिवर, पचोली, गुआचा वुड, एमिरिस. वो तो अपने यहाँ नहीं है. Character is long lasting. It adds depth and sophistication. Is ideal as fixatives. Example is vetiver, cedar, cologne, sandalwood, patchouli blend, woody, amber, natural perfume. Hmm. Yeah. Then we come to Oriental or Amber family, which is warm and exotic. Okay, so now we are going to more uncommon ones. हाँ, आपने सुने नहीं है. वो woody
फ्लोरल और सिट्रस हो चुका. नाउ दिस इज ओरिएंटल. ओरिएंटल में ना टिपिकली ऑपुलेंट सेंशुअल मिस्टीरियस परफ्यूम्स इंस्पायर्ड बाय एंशिएंट रेजिन्स एंड स्पाइसेस. टिपिकल नोट्स है वनीला, बेंजोइन, लैब्डेनम, मायरा, फाइव फ्रैंकिंसेंस, सिनेमन, क्लव. सब मसाले टाइप्स आ गए इसमें, देखा. सिनेमन है, क्लव है, वनीला है, दे स्पाइसेस. The character is warm and long lasting, often sweet, resinous or spicy, creates a luxurious aura. सब कैटेगरी है सॉफ्ट ओरिएंटल, वुडी ओरिएंटल, स्पाइसी ओरिएंटल. ठीक है. एंड एग्जांपल्स आर एम्बर, वनीला, फ्रैंकिंसेंस, मायरा ब्लेंड, लैब्डेनम, रोज ओरिएंटल. मूव अहेड. Yeah, just 1 minute. या. Hmm. Okay, now we come to fougere. Fougere. Okay, it's a French word, means fern like. Fern जो झाड़ है ना, fern, the plant you get, fern like. You must have seen that fern का झाड़, right? उसके Hmm. बहुत सारे ऐसे leaves होते हैं, उसको fern बोलते हैं. तो fougere means fern like in French. This family combines freshness, herbal complexity and woody depth. Traditionally seen in men's perfume. Typically men's perfume में हम fougere use करते हैं. So now fougere is a blend of टॉप, हार्ट एंड बेस. ओके. आपको ऐसा एक मिलेगा नहीं अकॉर्ड फैमिली. तो उसमें टॉप रहेगा लैवेंडर, बर्गामोट, हार्ट में रहेगा जेरेनियम, क्लेरीसेज, और बेस में रहेगा ओकमॉस, वेटिवर और कोमेरिन. सो कैरेक्टर इज एरोमेटिक, क्लीन, स्लाइटली स्वीट, बैलेंस्ड blend of fresh floral and woody element. Can you see top fresh है, heart is floral and wood is Hmm. woody element is the base. Example is lavender, oak moss, cologne and sage vetiver fougere blend. So tomorrow we are going to work in each of the family. आप समझे. 10 different fragrances of 10 different families बनाए हैं. So things becomes easy for you to understand. हाँ, later on then you can make different, जो आपको अलग करना है कर सकते हो. Yeah. Yeah. Then we come to cipher. हाँ. It is earthy and elegant. So it's a sophisticated blend with contrasting fresh citrus tops and deep mossy bases. तो इसमें टॉप एकदम फ्रेश और सिट्रसी रहेगा और बेस रहेगा काफी मॉसी. सो ओक मॉस इज अ वेरी रेगुलर बेस नोट यूज्ड हियर. टिपिकल स्ट्रक्चर इज टॉप बर्गमॉट, हार्ट में फ्लोरल आता है, बेस में ओक मॉस आता है. Character is earthy, slightly dry and mossy, elegant with and timeless, complex with slow evolution. Examples are bergamot, patchouli, oak moss, perfume, cypher, rose blends. So you're seeing we are coming slowly to the more थोड़े complex blends में आ रहे हैं, ये families में आ रहे हैं अब. Move. Now we come to a very regular green family. ये fresh और botanical है. इसमें आपके बेसिल आता है, तुलसी, क्लेरी सेज आता है, ग्रीन टी आता है, वॉयलेट लीफ आता है. So evokes the scent of crushed leaves, stems. So some people like this fresh botanical kind of smell. That's where this family comes in the picture. So typical notes are galbanum, basil, clary sage, violet leaf, green tea. Green tea or violet leaf easily नहीं मिलता है. Okay. Juniper berry you can add over here. Tomorrow we are going to use quite a lot of juniper berry. Okay. It's a one of the essential oils. Character is fresh, herbal, leafy. It's often unisex. Okay, it's not men or women. Unisex में होता है. And works beautifully in natural compositions. Example is basil, pated grain, colon, galbanum, vetiver green blends. Yeah. Now we come to herbal family. Clean and energizing. Aromatic herbal family. It's composed of herbs and aromatic plants with camphorous freshness and an earthy tone. ठीक है. तो जो बोलता है ना, जो रोजमेरी में कैसा कैम्फर कपूर का that fragrance you get, that freshness, that what do you say, warm कपूर kind of a smell, वो इस family में आता है. तो typical notes है rosemary, thyme,
sage, eucalyptus, lavender, mint. Okay, this is a herbal family. Character is energizing and therapeutic. Most of the therapy, spas में और जो what should say, I forgot the word now. In the spas, that they put the oil और नीचे वो candle रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? There's a word for it ना, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. Aromatherapy? Yes, in aromatherapy, that thing ना, they put the oil और नीचे candle रख के वो हाँ हाँ. एक word है now, I don't remember. So उसमें typically ये herbal family use होता है. In Okay. spas, and you get that smell, na, it's a eucalyptus ka, that rosemary ka. So also it is energizing and therapeutic, used widely in men's cologne and natural perfumery, bridges between citrus and woody family. Example is eucalyptus, rosemary, cologne, sage, lavender, aromatic blend. Yeah. Okay, now we come to gourmet family. It's edible and sweet. Smell को edible actually edible नहीं है, it's like edible and sweet smell ऐसा category को बोलते हैं. Profile is delicious, dessert-like scent, evoking edible aromas of comforting and warm. Typical note है vanilla, cocoa, coffee, tonka beans, honey, coconut. ये सब notes they come in gourmet family. Character is sweet and creamy and addictive. Modern addition to perfumery. I told you in 1980s या 1990s में addition हुआ था. ये पहले नहीं था. Traditional perfumery this was not there. It was introduced later on. Best balance with raisins or wood to avoid too much sweetness. So इसको use करोगे तो बहुत ही sweet ऐसा smell आएगा. So you have to balance it with raisins or wood. So example is vanilla, cocoa perfume, honey, tonka bean blend. Okay, now this is the last, which is marine or fresh family, clean and airy. This is my favorite. ये मेरा favorite category है because it has that sea breeze, ocean fresh, fresh rain. ये सब इस category में आता है. So in natural perfumery created using ozonic or aquatic impressions from essential oil like eucalyptus, peppermint, and citrus. Typical note is eucalyptus, peppermint, lime, grapefruit, cypress. So these are typical notes, but it has to be mixed with different families of accords and notes. तभी ये fresh smell मिलेगा आपको. आउट ऑफ नोवेयर ऐसा नहीं कि इट्स नॉट लाइक अ सिट्रस फैमिली. तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा. जो अपने फर्स्ट दो तीन देखे थे, दे आर वेरी बेसिक. दिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. हियर यू हैव टू मिक्स डिफरेंट अकॉर्ड्स एंड नोट्स, तब आपको ये फैमिली मिलेगा. Character is airy, refreshing, and modern. Works well in unisex fragrances, often used in top note accords. Example is grapefruit, cypress, marine accord, lime, peppermint, fresh blends. Yeah. So now you should know what blends well with what. वो भी पूरा स्टडी है. ओके. So citrus smell blends well with green aromatic floral. Okay, floral is with woody amber citrus. So can you read this? Woody oriental is with flory wood in gourmet. Fougere is with aromatic woody. So you have a family and it has to blend with the other family. Then with the fragrance. Yes, कौन से other family के साथ वो mix होगा. Example, aromatic family will mix well with fougere and citrus. Citrus. Yeah. आप समझे? ये स्मेल नहीं, ये भी फैमिली है. Out of the 10 family, this all families will mix blend with this families. This is a ideal benchmark है. Normal. ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए. This goes well with this. So fragrance families classify perfumes by their dominant scent character. They guide both creative formulation, customer understanding. Natural perfumery adapts this family using essential oil resin tinctures, staying true to the botanical source rather than synthetic. Wait. So, yes. Should we start day 2 ka theory? Now, Or are you saturated?
एक्चुअली। सैचुरेटेड। तो फिर कल का थोड़ा दिन लंबा जाएगा, चलेगा? नहीं मतलब कितना बाकी है? तो आई ब्रोकर इट डाउन इनटू 2 days फॉर दिस। सोचो एक साथ करते तो खत्म हो जाता। बहुत सारा बाकी है। सो व्हाट विल डू ना टुमारो, विल स्टार्ट। नहीं, इतना नहीं है, थोड़ा है, बट आई वांट यू विद अ फ्रेश माइंड टुमारो। कल का थोड़ा और, थोड़ा ठीक है, टेक्निकल कर हो लेते, जाएगा। विल गो लिटिल फास्ट, दैट्स ओके। टुमारो, राइट? नहीं और आज है ना, आधा घंटा और है ना, 1 o'clock तक है ना। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग लाइक लेट्स स्टार्ट द सेकंड वन, और फिर हाँ कल हम लोग। चलेगा। एनी क्वेश्चन अदरवाइज? नो, या आई सो थिंक लेट्स। जब मैं बनाऊंगी तब क्वेश्चन अराइज हो गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आ सकते हैं, बट एक साथ ही सब क्वेश्चंस भेजना, नॉट लाइक बिकॉज हाँ हाँ यस। रास्ता जैसे नहीं। और मे बी प्रोबेबली आफ्टर आई मेक इट एंड देन आई विल। आई हैव नो प्रॉब्लम, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑल्सो, बट ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट डोंट सेंड एकदम फ्रेगमेंटेड, और वेट फॉर मी टू रिप्लाई ऑल टुगेदर एक साथ। और एल्स इफ यू कैन सेंड मी अ वीडियो ऑफ मेकिंग, हाउ यू आर मेकिंग, तो मैं वो देख देख के बना सकूंगी। वो तो कल का वैसे भी रिकॉर्डेड आएगा ना आपको। हाँ तो वही मैं देख के बनाऊंगी। तो आप क्या बोल रहे हो, मतलब कल का नहीं करना है आपको? नहीं नहीं नहीं, आफ्टर क्लास आई एम सीइंग व्हेन आई एम या डूइंग माय दैट, टाइपिंग। या दैट यू डोंट वरी, वो हो जाएगा, दैट्स ओके। हाँ। ओके। सो सॉरी। सो व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स यू रिक्वायर टुमारो? ठीक है, कैन यू आपको एनलार्ज एक। द स्क्रीन? एक्चुअली ना, आई थिंक वी शुड डू दिस टुमारो। डोंट वरी, हो जाएगा कल में, बिकॉज कल ये सब के साथ बैठने वाली हूँ मैं। आई थॉट मेरा आज का थ्योरी लंबा जाएगा इसलिए, और शुड ये मैं स्किप कर रही हूँ, ये कल करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही बताओ ना फिर। ठीक है। सो हाउ, नो नो, दिस वी विल कवर टुमारो, जस्ट स्टार्ट में, बिकॉज आई विल बी सिटिंग विथ एवरीथिंग। द हम्म। ब्लॉटिंग पेपर, द वेइंग मशीन कैसा चाहिए, द बीकर्स कैसे चाहिए, वो मैं कल लेकर बैठने वाली हूँ, तो मैं कल ये आपको कल दिखाती हूँ। लेट्स कवर दिस, हाउ यू बिल्ड अप ऑफ परफ्यूम फॉर्मूला, सो इतना टाइम बच जाएगा। सो so when you're making a formula, okay, you should have a creative starting point. मतलब आपको एग्जाम्पल, आपके एक फ्रेंड को अगर एक परफ्यूम चाहिए, तो शी हैज टू गिव यू अ ब्रीफ। आप रैंडमली कहीं सोच के ऐसे ही नहीं हम्म। बनाने वाले, राइट? तो शी हैज टू गिव यू ब्रीफ कि उसको क्या चाहिए, उसको बचपन का एक कुछ याद आता है, अ रोमांटिक थिंग, अ फ्लावर, जैस्मिन, और सम समथिंग। सो यू शुड हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इमोशन इट शुड इवोक, what story should it tell, or who or what inspired it. So you should have a concept when you are building a perfume, a brand हम्म। new perfume. मतलब a proper perfumer ना, he has a story, पता है? मेकिंग अ फॉर्मुलेटिंग अ परफ्यूम इज मोस्ट डिफिकल्ट। बनाना तो कोई भी बना देगा, तो यू हैव टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि क्या आपको बनाना है। ओके। सो फॉर मी एग्जांपल, आई लव ये पहले बारिश का स्मेल। ओके, हम्म। इट्स कॉल्ड पेट्रीचोर इन इंग्लिश। वो गीली मिट्टी की खुशबू जो बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत हम्म। पसंद है, क्योंकि वो मुझे मेरे बचपन का गोवा की याद दिलाती है एवरी टाइम फर्स्ट हम्म। रेन, एंड आई लव रेन। मैं डेस्परेटली रुकी, बारिश हो ही नहीं रही है, तो वो स्मेल जो है ना, गीली मिट्टी का स्मेल, वो ना कैसे बनता है आपको आप पता है? वो इंडिया में सदियों, मतलब 2-3 thousand years पहले बना था, जब लोगों, वर्ल्ड को पता भी नहीं था ना एज सच कैसे हम्म। परफ्यूम बनता है, तब से कन्नौज में बना था ये। तो गीली मिट्टी का मतलब इन अर्दन पॉट अभी भी बनता है वो। ओके, वो पानी डालते हैं, और उसमें ना बारिश के पहले, बारिश जब, ओके फॉर एग्जाम्पल, जो तपी हुई धरती पे, जमीन पे जब बारिश होती है ना, तो बारिश का जो ड्रॉप मिट्टी में जाता है, तब एक ना बैक्टीरियल ये होता है, प्रोसेस चालू हो जाता है।
So that gilli mitti ka smell is actually bacterial smell that you are getting, Hmm. and that is bottled and made in Ujjain. उज्जैन नहीं, उस कनौज, नॉट उज्जैन, कनौज, उन उत्तर Hmm. प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कनौज इज कॉल्ड, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। Ideally, Kannauj should have been the perfume capital of the world, but because we were captured and ruled upon, तो फ्रांस का ग्रासे करके एक जगह है, that is called as the perfume capital of the world. Yeah, this I'd seen in the one of the reels that in huge pots के अंदर flowers, Correct. fresh flowers That, डालते हैं and हाँ, then पानी ये गिरता है है, वो उससे। that is they are making a rose का perfume there. हाँ। What you are saying is right. पुराना पुराना ट्रेडिशन है, और वो एक्चुअली रोज का परफ्यूम बनता है, एसेंशियल ऑयल बनता है, सब कुछ बनता है वहां, एंड इट इज माइंड ब्लोइंग। सब एक्सपोर्ट हो जाता है, इंडिया में कुछ रहता ही नहीं, इट इज दैट एक्सपेंसिव, बट इट इज अमेजिंग एंड इट्स अ डाइंग आर्ट। ये लास्ट जनरेशन है जो बना रहा है वहां। तो ये जो गीली मिट्टी की खुशबू वैसे ही बनती है, इन दैट लार्ज क्ले पॉट, दैट स्मेल हम्म। गोज एंड दे पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइप वो जो कुछ प्रोसेस होता है, एंड दैट स्मेल यू गेट। सो यू शुड नो व्हाट स्मेल यू वांट टू डू। और एक ऐसे ही एग्जांपल ये है कि को अगरवुड सुना है नाम आपने? अगरवुड, अगरबत्ती जो है ना, हम्म। अगरबत्ती, उसके उसमें जो बीच में लकड़ी जो होती है ना, अभी तो डुप्लीकेट है, पहले के जमाने में दैट इज टू बी अगरवुड, इसीलिए वो अगरबत्ती हो गया। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, देर इज समथिंग कॉल्ड ओक मॉस, अगरवुड। सो अगरवुड कैसे बनता है, उसका फ्रेग्रेंस, वो जो झाड़ होता है ना अगरवुड का, उसको ना ये हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है झाड़ का, हम्म। फंगल जो होता है ना, दैट पार्ट, इट गेट्स इन्फेक्टेड, एंड दैट फंगल से जो प्रोसेस होके जो स्मेल आता है ना, उससे वो अगरवुड का स्मेल आता है। सो सो इंटरेस्टिंग। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एम्बेरेट, एम्बेरेट। व्हाट इज एम्बेरेट? इट इज वेल है ना, वेल, द एनिमल वेल, उसका वॉमिट, उसका जो वॉमिट है उसको एम्बरेट बोलते हैं। वो ना इतना एक्सपेंसिव है, एज एक्सपेंसिव एज डायमंड्स, और इतना है कि अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अभी लोग नहीं करते उसको हार्वेस्ट, क्योंकि उसके लिए वेल वेल को मार रहे थे एंड ऑल दैट थिंग स्टार्टेड। सो ना अभी सिंथेटिक होता है। सो लॉट ऑफ दिस कंपाउंड यू नीड टू जस्ट स्टडी इट। एम्बरेट है, फिर this agarwood का example है। So all I'm trying to say is all these ingredients are very expensive. If you see sandalwood, red sandalwood is banned now, मिलेगा नहीं आपको रक्त चंदन। मालूम है। वो वो झाड़ अभी पूरा प्रोटेक्टेड है। सो उसके अभी सिंथेटिक कंपाउंड्स आए, तो अगर आपको नेचुरल नहीं मिलता, इट्स ओके इफ यू यूज सिंथेटिक कंपाउंड्स, if at all you need to use. So yes, so you should have a clear vision of what you want to do. You should have a starting point. लाइक अगर आपको फ्रेश बनाना है मॉर्निंग ड्यू, तो यू नीड टू हैव फ्रेश, क्लीन क्लीन एंड ग्रीन काइंड ऑफ नोट्स। सीक्रेट बनाना है तो मेडिटेटिव एंड ग्राउंडिंग करना है तो वुड ही लेना है। सिट्रस, ब्राइट एंड जॉयफुल, तो यू टेक द सिट्रस नोट्स। Then you have to work on your choosing the right ingredients. So the natural perfume relies on fragrance pyramid, top, heart, and base. So you have to work on the family of the notes. Top note, heart note, base note. Normally 25 to 30% top note होता है, 40 to 50 is heart note, and 20 to 30 is base note. Accordingly, you have to work with your ingredients. Okay, now this is, I'm just touching upon this because we are not going to follow this. ये specially सिर्फ natural perfumery में follow होता है, that is core, enhancing and extended method. It is like a fragrance pyramid but in a different way, just letting you know. core note में क्या होता है, एक main कैरेक्टर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल रोज इन फ्लोरल ब्लेंड। एनहांसिंग में क्या होता है, उसको एक और एक हम डालेंगे, जेरेनियम और पाल्मरोजा विथ रोज, तब वो एक्सटेंडेड नोट हो जाता है, एनहांसिंग नोट हो जाता है। और एक्सटेंडिंग नोट इज मॉडिफाई एंड लेंथन द इंप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल bergamot to lift or sandalwood to anchor it. So this is just for your understanding, okay? We are not going to follow this method. कोर, एनहांसिंग एंड एक्सटेंडिंग मेथड थोड़े जन यूज करते हैं, बट ज्यादा से ग्लोबली पीपल यूज द पिरामिड। शुड आई मूव? Yep, just 1 minute. या।
Yeah. So when you're drafting a formula, start small. Start with a test batch of 5 ml, 2 ml. 2 ml बहुत ही कम हो गया. 5 ml is okay. 5 grams पकड़ लेते. We'll talk in grams, not ml. You have to write your formula in percentages. No, not drops. Okay, we drops ignore करना. So you have to start small. You have to write your formula in percentages. Okay. Then you have Can to you have 1 minute go to the previous page? ये Yeah. वाला. No, no. The percentage page. Yeah. Then you have a blending order. So you actually when you blend, no, हम चालू करेंगे when tomorrow when we are going to work we'll start with top note, top heart and base because ऊपर से नीचे मुझे जाना है. But typically people start with base note. They form the foundation. Then you add the heart note that gives body and warmth, and you finish with the top note. It doesn't matter as such, but this is the way it is done. Then you have to stir or swirl gently after each addition. एक एक जब आप like for example बेस नोट डालोगे, you'll put a vetiver, sandalwood and frankincense. वो तीनों पहले जो बेस नोट डाला है वो डालने के बाद आप स्टर करोगे. फर्स्ट वो बेस नोट हैज टू मिक्स प्रॉपर्ली. देन यू पुट हार्ट नोट, maybe a rose, a lang lang, and a bergamot. That again, the whole thing you will mix again, and then you put the top note and mix. So blending is very important. जितना बनाना mix measurement है उतना blending भी है. You really have to blend it for good 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. तब वो notes ठीक से blend और harmonize हो जाते हैं, and then you keep it for maturing. Then is evaluation during blending. After blending, अभी for example कल हम बनाएंगे, after you have to allow the mixture to rest for 24 hours. First evaluation आप करोगे. तो कल बनने के बाद ना मैं इमीडिएटली परसों आपको भेज दूंगी, या कल के कल भी इफ आई कैन सेंड इट टू यू, कुरियर इट टू यू, आई विल ट्राई टू डू दैट, और परसों आई विल सेंड इट. क्योंकि आप जैसे ही आएगा यू गोइंग टू ओपन एंड गोइंग टू इवेल्युएट इट, स्मेल इट. ओके, बिकॉज द स्मेल ना विल चेंज एवरी वीक. थोड़ा यू नो आपको एक उभरा हुआ स्मेल लगेगा. जैसे जितना जैसे जैसे वो हार्मोनाइज होंगे ना, द स्मेल विल कम आउट. ओके, यू हैव टू स्मेल ऑन बोथ स्किन एंड ऑल्सो ऑन द सेंट स्ट्रिप. मैं आपको आज लिंक भेज दूंगी, वो एक सेंट स्ट्रिप मंगा लीजिए. यू गेट इट ऑन Amazon. ठीक है, बिकॉज सेंट स्ट्रिप दैट इज द ब्लॉटिंग पेपर ना, उस पर स्मेल थोड़ा अलग आता है और वो स्किन के ऊपर अलग आता है. इनिशियल अगर नहीं भी मंगाना है तो इट्स ओके, यू कैन स्मेल इट ऑन योर स्किन. एक्चुअली राइट नाउ डोंट बाय एनीथिंग, आप स्किन के ऊपर ही ट्राई करो, दैट्स ओके. एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपको ओपनिंग कैसे लग रहा है. यू अंडरस्टैंड, यू इट्स वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू बी लाइक इनटू द सिस्टम. How are you liking the transition from top to heart? How is it flowing? And does the base provide enough support? So that's why now perfume is more like an offline workshop because you are there actually smelling it and doing it. But it's okay. Now a lot of people are doing it online also. So either way, I'm going to send it to you. तो आपको पता चल जाएगा. And you have to take notes immediately after smelling and again after few hours, maybe next day. 24 hours, 24 hours, 12 hours is good. देन कम्स एडजस्टिंग एंड रिफाइनिंग. सो आप पहले बार बनाओगे, ऐसा नहीं है कि एकदम से परफेक्ट सुपर कुछ मिलेगा आपको. तो योर फर्स्ट फॉर्मूला माइट नॉट बी परफेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. Professional goes, they go through several rounds of modification before finalizing a composition. So your formulation, अभी जो मैं कल बना रही हूँ वो तो फाइनल वाला है, पर आप जब बनाएंगे ना यू आर गोइंग टू मेक एडजस्टमेंट. तो आपको एक अलग सा एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए. फर्स्ट टाइम आप इवेल्युएट करोगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपको लगेगा अरे नहीं ये थोड़ा कम लग रहा है, यू वांट मोर ऑफ सैंडलवुड, इफ यू वांट लिटिल मोर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू बैलेंस इट.
And good time is you have to increase the notes by 1-2% gradually, एकदम से ज्यादा नहीं डालने का, फिर वो ओवर पावरिंग हो जाएगा. Avoid changing more than 2 ingredients at a time, otherwise आपको समझेगा नहीं if you're changing. Okay. Again, the new version you have to test again after 24 hours. And every mod should be numbered and recorded for reference. Try your best to keep it up like this. Try your best. Okay. Then comes dilution and concentration. नाउ माइंड यू, ये जो मैं सब बता रही हूँ ना, ये सिर्फ ब्लेंड्स ऑफ एसेंशियल ऑयल है. अभी तक हम लोगों ने कैरियर ऑयल नहीं डाला है इसमें. ये जो मैंने सब ज्ञान पेला है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. टॉप नोट और बेस नोट अभी तक सिर्फ हम एसेंशियल ऑयल की ही बात में है. सो योर दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव नॉट येट डाइल्यूटेड इट. Once you think yes, the smell is perfect, now it's perfect, then you have to dilute it as per your choice. अत्तर है तो आप फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल लोगे, and if it's spray then you are going to use alcohol. Okay. Concentration affects and how much you're going to concentrate. Like UD perfume will be around 20% essential oil, 80% ethanol. This is an alcohol. अत्तर में 10% essential oil, 90% carrier oil. This is a good strategy of 10% EO and 90% carrier oil. और जब टेस्ट करना है, you can make a smaller dilution also if you want. Okay. इसको फिलहाल रोक देते हैं हम. फर्स्ट यू लर्न एंड देन व्हेन यू वांट एक लेवल अप होंगे तब ये रिकॉर्डिंग द फॉर्मूला में और आइए. स्टिल आई जस्ट टेल यू. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉर्ड इट दिस वे, जैसे सजेस्टेड फॉर्मेट है. इंग्रेडिएंट लिखोगे, टाइप लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, नोट्स लिखोगे. आप चाहिए तो फंक्शन और नोट्स राइट नाउ नहीं लिखना है तो मत लिखिए. ये टाइप, इंग्रेडिएंट और परसेंटेज लिखिए. एक्चुअली रखिए ये, आई एम सॉरी, कीप इट, अदरवाइज हाउ विल यू रिकलेक्ट. सो दिस इज अ गुड फॉर्मेट. यू क्लियर? So, what is the art of balance? The opening should feel smooth, not sharp. It should not come as a very strong, people will like make face. कि एकदम क्या smell है ये? The heart is distinct and expressive. Base has to feel rounded and supportive. And the scent should transition naturally over time. So overall, it should be nice, subtle, good smell that should come out. Not very strong, not very faint also. एकदम हल्का फुल्का स्मेल भी आएगा तो कुछ पॉइंट नहीं है. एंड ट्रस्ट योर नोज. नो मैटर परसेंटेज जो है, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं आ रहा है स्मेल, तो यू गो अहेड विथ योर नोज एंड नॉट द नंबर्स और परसेंटेज. ओके. So technical ratios guide the process, but intuition completes it. Okay, then we come to resting. The blended oil should rest one day at least before making judgment. अब भी बनाया तो एकदम से उसको चेंज मत करने जाओ, उसको एटलीस्ट 24 आवर्स दो. लेट इट सिट फॉर एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स मिनिमम. उसके बाद फर्स्ट इवेल्युएशन करो, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स देख उसको ना, टॉप नोट, टॉप मिडिल एंड बेस नोट को हार्मोनाइज होने भी टाइम लगता है. ठीक है. So natural perfumes often need time for molecular interaction to settle, especially in natural perfumes. Synthetic में नहीं आता. For alcohol-based perfumes, allow for full maturation aging of 3 to 4 weeks. I told you, जब आप sprays बनाओगे compulsory 3 to 4 weeks आपको रखना ही पड़ेगा, वरना alcohol का smell ज्यादा होगा and you will not get the real ये. So what happens is this step unifies the composition and softens the harsh edges. After aging, perform a final evaluation on scent strip and skin. Actually दोनों पे होता है evaluation. आप स्किन के ऊपर भी देखोगे, आप सेंट स्ट्रिप पे भी देखोगे. Then document any changes in diffusion, sillage and dry down. Then of course naming your perfume. It is like naming a baby. आपको जो नाम अच्छा लगे, but it should be related to the perfume का notes. It should be very nice name, like morning whisper, pure light,
लाइक मेरा जो इवेल्युएशन जो मैंने आयरलैंड में भेजा था, उसका था मॉनसून विस्को। इतना नाइस नेम ना, और मैंने वो थोड़ा गीली मिट्टी के हिसाब से किया था। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स परफ्यूम। इट टुक मी रियली लॉन्ग टाइम फर्स्ट तो इंग्रेडिएंट्स आने, ये वो एंड ऑल, but it was a very well rounded, so have a very exotic naming, not necessary western, आप इंडियन नाम भी दे सकते हो, but name your Hmm. perfume something nice and exotic, okay, instead of some ऐसे random citrus citrus मत लिखना. So trial, maturation, evaluation. No perfume is complete the moment it is blended. Okay, वो complete नहीं है, वो blend होने के बाद भी उसको time लगेगा. Natural perfume evolves slowly. They need time for each molecule to settle, merge and mature. This stage is often overlooked by beginners. It is where good blends become great perfumes. आप समझे? You need patience. ऐसे ही बनाया, अरे उसको टाइम दो, उसको मच्योर होने दो. Because in natural perfumery, some molecules they have to settle, merge, and mature. That is very important. Trials, maturation, evaluation are essential step in learning and refining the process. Through this method, you develop your perfumer's judgment, ability to recognize balance, longevity, and harmony in your creations. So you have to be a little creative in this, हाँ. मतलब ये this is unlike my other workshops जो ऐसा ऐसा है, केमिस्ट्री है, ऐसा ही होना चाहिए. यहाँ Hmm. थोड़ा आप ना 19-20 जा सकते हो. दिस इज लाइक एन आर्ट, आप पेंटिंग जैसे बनाते हो, अपने मन से करते हो, तो एकदम मन नहीं, गाइडलाइंस तो लेना ही है, Hmm. बट यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव इन दिस. Okay. So why you have to do trial? It is a test version of your final perfume that will be created. आप एक मास्टर बनाओगे, और उसके बाद once you like it, or you take your peer, you might show it to your sister, your friends. तो that's why these trials are very important. उनसे उनका feedback लोगे, फिर Hmm. वापस we work on that. That is called trials, and that's why, and always trial में don't go for a big batch. छोटा छोटा 5 ml, 5 grams का you give them and ask them the feedback. So it helps you to trial helps you to identify the most balanced ratio of the ingredients, observe how top, heart, and base notes evolve, understand how small adjustments affect the entire composition, build your own knowledge of material interaction. So every trial is an opportunity to learn. It's about patient observation and discipline. Okay, now there's something called as vertical trial study. Okay, now what is vertical trial study? ये बहुत important है, ध्यान से सुनिए. यहाँ आप you make in vertical trial, you create several versions of the same formula while keeping the ingredients same. मतलब आपके इंग्रेडिएंट्स सेम रहेंगे, टॉप मिडिल और बेस के, सिर्फ उसके परसेंटेज चेंज होंगे. Okay, like top note, if you are having a bergamot and a grapefruit in like 15 and 10%, सेकेंड इसमें आप उसका परसेंटेज चेंज करोगे, बट रहेंगे वही. आप समझे टॉप नोट वाले, bergamot and grapefruit. Ingredients will not change, percentage will change. That is called vertical trial study. And then you compare which version feel more harmonious after aging. So this method helps you understand balance and the relationship between lightness, body, and depth in a perfume. So example, अगर आपको कुछ फ्लोरल बनाना है, तो इसमें आप ट्रायल्स बनाएंगे ABC या A और B. ट्रायल ए में ये इंग्रेडिएंट्स इन दिस परसेंटेज, और ट्रायल बी में सेम इंग्रेडिएंट्स इन लिटिल डिफरेंट परसेंटेज, एंड देन यू विल स्टडी विच वन इज बेटर. यू आर यू क्लियर? या. Then we come to horizontal study. Okay, now here what happens is you create a variation of a formula by changing one or two ingredients. आप इसमें ingredient एक आध दो change करोगे. Okay, पहले इसमें vertical में you don't change ingredients, you just change the percentage. Here you might change the ingredients. Like instead of geranium, you can use a clary sage. आप सैंडलवुड के जगह पे सीडर वुड लोगे.
दे आर सेम वुड फैमिली, आप समझे, लाइक हम्म कुड बी लाइक सम इंग्रेडिएंट्स नॉट अवेलेबल और यू थिंक दैट वन इज टू शार्प, तो आप इससे सटल सटल वाला लोगे. हम्म So what happens is, and you don't change all of them. फुल फॉर्मूला में एक या दो ही चेंज होगा, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, नॉट दैट एवरी हम्म अदर थिंग विल बी रिप्लेस. So here all other ingredients remain the same. This allows you to explore how different material express the same theme, giving you a broader creative vocabulary. हम्म Okay, it will give you more enhanced or more subtle kind of a final product when you change one or two ingredients. So horizontal trials redefine your artistic judgment, and they teach you the emotional and technical impact of each material choice. Yeah, this I've covered again. It's maturation or maceration, एक ही है. Is the period during which a perfume blend is left to rest undisturbed. आप ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करोगे. हाँ, जब वो परफ्यूम रेस्ट कर रहा होगा ना, you will not try to open it again and again, वरना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. एक बार क्लोज्ड है, ठीक है, आपका जो इवेल्युएशन स्टडी. फिर जब मैं ये बोल रही हूँ, जब आप हम्म इवेल्युएशन करोगे, तब आपने डाइल्यूट नहीं किया है, आप समझे, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ काम कर रहे हो. पर एक बार सब डाइल्यूट हो गया विथ योर व्हाटएवर इथेनॉल और योर फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल, देन यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दैट परफ्यूम वेरी ऑफन. During this time, the ingredient interact on a molecular level, creating smoother transition and more cohesive scent. Why maturation is essential? It softens harsh top note. It helps resins and fixatives dissolve completely. It allows new subtle accords to emerge. It gives the perfume its final character. Okay. और टुमारो तो नहीं होने वाला. लॉट ऑफ टाइम क्या होता है जब आप ये रखते हो ना, स्पेशली इन अत्तर्स, ओके, इवन इन स्प्रेज ऑल्सो, जो बेस नोट होते हैं ना, वो ना ऐसे सेडिमेंट्स, यू गेट सेडिमेंट्स. Sediments means, you get small हम्म remainder of the particle, especially of the base note. Resins के और रहते हैं. तो जब फाइनल परफ्यूम बनता है ना, यू हैव टू यूज अ फिल्टर. परफ्यूम का एक फिल्टर पेपर आता है, या कॉफी, कॉफी नहीं, यू गेट स्पेशली परफ्यूम फिल्टर. ऐसे यू जस्ट मेक अ कोन एंड यू हैव टू फिल्टर बिफोर हम्म बॉटलिंग. मैंने सिर्फ अभी याद आया ऑफ हैंड, इसीलिए. आर यू क्लियर? कल मैं यस दिखाऊंगी आपको बॉटिंग पेपर है ना कैसा रहेगा. कल अपन को कुछ मिलने नहीं वाला, बट रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट हाउ टू फिल्टर इट. यू गेट दोस ऑन Amazon, कोई बड़ी बात नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट. आई लाइक दैट सेडिमेंट्स, पर आप बेचोगे तो ऐसा उनको लगेगा कुछ कचरा है. बट जब हम्म आप एक्चुअली यू आर टॉकिंग ऑफ नेचुरल ना, लाइक इफ आई एम सेलिंग ना, आई विल जानबूझ के कीप इट, लेट देम नो हम्म दैट दिस इज द ओरिजिनल हम्म वन. अदरवाइज दिस इज ओके. हम्म Natural perfumes especially benefit from proper aging, unlike synthetics. Natural ingredient continue evolve, deepening, blah blah blah. तो जितना ज्यादा mature रखोगे ना, नेचुरल परफ्यूम ना उतना ज्यादा इवॉल्व होता है. ये वापस वही है. यू कैन जस्ट, अल्कोहल बेस इज 3 to 4 weeks, ऑयल बेस 1 to 2 weeks. रेजिन रिच जो होता है वो 4 to 6 weeks. दैट हम्म इज यूजिंग मोर ऑफ ओक मॉस और लैब्डम, दैट्स ओके. During maturation, it is best to avoid opening the bottle frequently, as oxygen and light can alter the process. It will start oxidizing, so avoid opening the product. So how it is supposed to be kept? Environment, store perfumes in a dark amber glass bottle. आपको amber bottle ही लेना पड़ेगा, because otherwise light will react with your perfume. Maintain temperature between 18 to 24. तो दैट यू हैव टू फिगर आउट. आई एम नॉट सेइंग कि एसी में ही रखो, बट बहुत हीट है ना, तो वो परफ्यूम ना थोड़ा डिग्रेड हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन ना, वेरी हॉट क्लाइमेट या will change its molecule. Keep away from direct sunlight or moisture. Handling, swirl the bottle gently every few days to help. हाँ, when you kept the bottle ना, ओपन नहीं करना है उसको, ऐसे ऊपर ऐसे थोड़ा हिलाने का है. Swirl it. Do not shake vigorously. Slowly हम्म एकदम. Storage, label each bottle with name, formula and blending date. भूल जाओगे, trust me. When you make छोटा हम्म छोटा also ना, you have to just छोटा label लगाओ, date डालो और सब डालो, वरना आपको याद नहीं रहेगा, that's for sure. Because initially सब smell आपको थोड़े 19-20 आसपास के ही रहेंगे, तो you have to write the trial numbers, formulation, date.
It has to be labeled. और obviously bottle हमेशा सीधे ही रखो. Hmm. See that it's not टेढ़ा. Even if you say that it's not, even if you say that it is leak proof, वो leak हो जाएगा. So don't take chance. So evaluation after maturation. Once the perfume has matured, it must be evaluated systematically to judge its performance and evaluation. Normally, evaluation process is you smell it on a blotter strip, Hmm. the strip fragrance strip that you get. Dip your strip into the perfume, allow alcohol to evaporate, then record your first impression. This Hmm. assesses freshness, clarity, and balance. Then you can smell it on your skin. Apply small amount on pulse. Okay, so on skin Hmm. you should always put it on pulse points. Okay, Hmm. that's where your body actually gives the more fragrance. So it could be your behind your eye, ears, pulse points. That is wrist or inner elbow. Observe how it develops over several hours. Here you understand the note transition, that is opening, heart and dry down. एंड थर्ड वन इज टाइम बेस्ड, मतलब 15 मिनट के बाद स्मेल कैसा है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, तो आपको पता चलेगा कब रुकेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बेचोगे ना, सामने वाला पूछेगा ये कितना घंटा रहता है. यू डोंट लाइक रहेगा 6 8 घंटा 9 घंटा. यू हैव टू एक्चुअली मेक इट वेरी क्लियर कि मिनिमम 6 hours, मिनिमम 5 hours. So it's better not to have issues. And anybody will ask you, itna kam kyun, or whatever you say, that it's all natural. There's no synthetic compound. In fact, what you're using is biohazard. Thankfully, Gen Z को पता है ये. Young people will buy your stuff, I'm telling you. वो अपने ही जनरेशन को ना ऐसे वो एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए ऐसे वो. Ah, okay, now this is very important. That is sensory evaluation and nose training. You have to train your nose, which is very difficult. मुझे तो बहुत त्रास हुआ था because my nose is very delicate with all possible allergies. So, developing your sense of smell is a lifelong process. एकदम से नहीं होगा. Perfumers जो होते हैं ना, expert Hmm. वाले, they have trained their noses for years and they're Hmm. still training. So your nose should pick up even small smell of your perfume. Should we wait? Are you okay? Can we stop? Hmm. It's too बहुत हो गया. much. Hmm. अच्छा, I thought so. That's why I was saying. But then you were like, let's continue. 1 मिनट है, मैं देखती हूँ और कितना है. ठीक है. We stopped at 9.9 से कल चालू करेंगे because ये important point है. How to train your nose. Remind me, yeah, if I forget. Yeah. Yeah. I hope you enjoyed. Yeah, yeah, it was good. Good knowledge. Good knowledge. Something new, ना. पहले कैसे I आपने never heard वो about all these things. हाँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू. और एक बार आप ना, आपके नोट्स मैं आपको कुरियर करूंगी. ओके. एक बार वो ना, ये नोट्स पे मैंने बहुत मेहनत की. आई एम नॉट किडिंग. आई वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस बिकॉज बहुत इंफॉर्मेशन को कंसाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई कुड हैव मेड दिस 1000 पेज का ऑल्सो. क्या पॉइंट है, कौन पढ़ने वाला है. तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंसाइज इट. प्लीज डोंट शेयर दिस नोट्स विद एनीवन. Yeah, sure. या ये पीपीटी कुछ काम का नहीं है. जो नोट है ना, वही मैंने पीपीटी किया है. जो मैंने आपको No, भेजा है ना, वो चाहिए no तो आप problem. हो सके तो रिवाइज करिए. कल हम 9 से वापस चालू करेंगे. ओके, No आई टेल यू problem. व्हाट इज ये. दिस 9 से विल स्टार्ट. विल टॉक अबाउट ऑल द इक्विपमेंट्स दैट विल रिक्वायर, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक विद ऑल दिस परफ्यूम्स. Okay. या, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग इसका इन सम टाइम. Sure, not a problem. तो पर डे होना चाहिए. वी मीट Yeah. टुमारो एट 11. Yeah. चलो, बाय. टेक केयर. Okay. See ya. Take care. Bye. बाय.